Again, welcome all. As I mentioned earlier, the theme of this session is social leadership for entrepreneurship and social innovation. It is a visionary session which aims to foster the culture of entrepreneurial leadership and social innovation for a better world. Today, we have three core themes, that is ideas to impact, exploring the entrepreneurship and social innovation, building a better future, and driving the change for better future of the world. I'm sure these sessions will become power boosters by promoting social leadership and encouraging the mindset of innovation. Definitely, this will inspire and empower the individuals to become change makers and solution providers. Today, we have three eminent guests or speakers. So later they will be introduced by the session moderator. So may I now request our technical team kindly relay a curtain raiser film on this session number 5, the social leadership for entrepreneurship and social innovation. This session is based on social leadership for entrepreneurship and innovation. Ideas to impact, exploring entrepreneurship and social innovation, focusing on nurturing innovative ideas and transforming them into impactful ventures that address societal challenges. Building a better future, the role of entrepreneurship in social innovation, highlighting the pivotal role of entrepreneurship in driving positive social change and sustainable development. Driving change, entrepreneurship and social innovation for a better world, emphasizing the power of innovative thinking and business acumen in creating a positive impact on communities and the environment. This session will be focusing on inspiring and empowering individuals to become change makers and contribute to the creation of a more equitable, inclusive, and sustainable world. Dear friends, as per Indian tradition, it is said that Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, but very important aspect we have Atiti Devo Bhava. My dear friends, we are going to felicitate our today's eminent speakers. So may I now request session moderator Dr. Swati Bankar ma'am and other dignitaries.
Yeah. May I now request Dr. Swati Bankar ma'am, Associate Dean, School of Business, to welcome the guests and brief about the session. A very warm welcome to one and all present here. I am honored to stand before you today at the Social Leadership Development Program organized for all first-year students. Our today's discussion is going to be on social leadership for entrepreneurship and innovation. And for today's session, we have the honorable guest, Mr. Gauri Shankar ji, the founder of Fabor 100% plant-based wool alternative, Mr. Mansuk Prajapati ji, the visionary founder of MITWPU, Dr. Bhargavi madam, the director of Bapu Trust for Research and Mind and Discourse. Other dignitaries on the dais, my dear faculty colleagues, students, once again a very warm welcome. Today we have gathered here to explore the topic which is of immense importance, a social leadership for entrepreneurship and innovation. It is a session that promises to be insightful, inspiring, and transformative. And I'm thrilled to see such an enthusiastic turnout. Our journey today takes us into the heart of leadership that goes beyond the titles and position, a kind of leadership that is deeply rooted in making a positive impact on the society. It's a journey into the world of innovation, where the creativity, thinking, and problem solving join to address demanding social and environmental challenges. And it is a journey into entrepreneurship, where individual creates solution that not only thrives in the marketplace, but also brings a tangible improvements in the life of people and the health of the society. As we get on to the exciting journey, I am delighted to introduce our esteemed guests who have graced this occasion with their presence. We have, as I said, Mr. Gauri Shankar ji. His venture that introduces us to 100% plant-based wool alternative. His innovation is a testament to a power of sustainable solutions and serve as an inspiring example for all of us. Mr. Mansuk Prajapati ji, a visionary founder of MITWPU, an enterprise that not only creates innovative clay products, but also supports the local communities and traditional craftsmen. His entrepreneurial journey represents the potential for business to drive social changes. Dr. Bhargavi madam, whose pioneering work in the field of mental health and well-being has touched countless lives. Her dedication in addressing crucial society issues through research and discourse is truly commendable. Their presence here today underscores the importance of blending leaderships, innovation, and entrepreneurship for the betterment of the world. They have not only imagined the change, but have also taken the bold steps to make it reality. Today's event is not just listening to their stories, but it is about engaging in a meaningful discussion, gaining insights, and fostering a spirit of collaboration among all of us. It's about empowering each one of you, the future leaders of tomorrow, with the knowledge and inspiration to drive positive change in our communities. So I encourage you to be an active participant, ask questions, share your thoughts, and connect with the like-minded individuals who share your passion for social progress. Let me express my deep gratitude to our guests for gracing this occasion. With their wisdom and experience, I also thank MITWPU University for their commitment to fostering social leadership in providing a platform for innovation and entrepreneurship. Let's embark on this enlightening journey together as we explore the coming together for social leadership, innovation, and entrepreneurship. Thank you. And let's make today's event truly memorable. Thank you, one and all. And a warm welcome to all the speakers. Thank you, Swati ma'am.
As per Indian tradition, it is said that Atiti Devo Bhava. We are moving towards the felicitation ceremony. So may I request all the dignitaries and session moderator ma'am to felicitate our today's guest. So first guest is D. Gauri Shankar and Madam Ellen. They are founder and co-founder of FABOG, 100% plant-based wool and its alternative. Their way towards a sustainability is commendable. Let us have a huge round of applause, my dear friends. Indeed, it's a great honor to hear today. We are going to hear Gauri Shankar sir. Thank you, Gauri Shankar sir and Madam Ellen, for gracing this occasion. We have another esteemed guest today, Dr. Bhargavi, Managing Trustee, the Bapu Trust. Ma'am has her work in social innovation. Is working for the social or mentally retarded students. Thank you, ma'am, for gracing the occasion. We have next guest, already we have heard, and a founder of MITWPU, Mr. Mansuk Bhai Prajapati. Let us have a huge round of applause, my dear friends. We have heard name MITWPU. We have variety of products made up of clay, and he has worked for the sustainability and sustainable products which are made up of clay. Again, let us have a huge round of applause, my dear friends. Thank you, guests, for gracing this occasion. Definitely, we will be eager to hear you and your life work and your achievements. Let us move to the next part of the session. There is ancient proverb in Chinese, winds of the change blow. Some people build walls and others build windmills. This is the way of approach. In line with this, today we are blessed with gracious presence of Sri Gauri Shankar sir, who is the founder of FABOG, which is 100% plant-based wool alternative. He is a fashion entrepreneur with 15 years of experience in fashion industry. He has worked as a freelancer merchandise. He has collaborated with prestigious brands. He co-founded the Natural Dye House in Tripura, aiming at replacing chemical processing methods with sustainable alternatives, which has gained recognition at the 9th Future Fabric Expo in London. His product is signaling the global appeal for these eco-friendly innovations. May I now request D. Gauri Shankar sir to address the gathering. It's indeed honor to hear him. Let us welcome him with a huge round of applause, my dear friends. Hi everyone. Very thankful for the World Peace University for inviting us to talk here. Today I'm going to explain a little bit more about what we do and what our company does. See, we work with this plant called Calotropis X. If possible, can you put the picture, the technical team? I asked some pictures to be put. So we work with this very specific plant called Calotropis. You would have seen it all around India. I'm sure every one of you has encountered this plant, this very specific plant. It's called Calotropis, and what we do as a company is we manufacture fabrics out of it. We found out that
it has a hollow fiber that is as good as wool that to keep the warmth, and so we found out, this is one of the innovative plant that we saw. We were surprised that how much that this plant has been neglected. So we started researching on this plant. Being born in a weaver's community textile family, I was naturally destined to work in textile industry for quite a long time. So when I was working in the industry, I was really disappointed what textile industry was doing. So I was always had this question of why. What are we doing in this industry, contributing to this most polluting industry? So I really wanted to see a change. Right from the day I was born, I saw chemicals being dumped in my backyard, and I've seen colors are being dyed and dumped into our ecosystem, which in turn damaging our landscapes, and I saw the damage firsthand. So I had to take action on my own. So when I found this plant after 15 years of working in the industry, a moment of spark happened, and I figured out that this could have a very big potential, considering the fiber is hollow. It could replace the wool in the entire animal-based industry. So we thought we'll start researching on this plant. At the beginning, it was a very expensive hobby, of course, but the question of why motivated me to go and explore more research on this plant. And then I understood the plant is much more than what I thought. This plant is very, very much used in Ayurveda. It's one of the medicinal plants that was used in Ayurvedic system of farming, organic farming. And it repels pests. So this was from the research papers that I've read across written by many scholars on different segments of, let's say, one of them were researching on the fibers, another was researching on the repelling abilities of the plant, and the disease control, disease management of the plant, and it repels mosquitoes. So everyone was doing a specific research. What I saw from all these researchers was that there was no inclusive approach to this plant. So what we did was we made sure in our processing of these fibers, we made sure there's no chemicals used, and we made sure that the entire extract becomes as a pest repellent for farmers to replace about quite a lot of pesticides. We right now supply this insect repellent from the extracting the fibers to nearly 3,000 farmers, and as a small team of startup, we managed to replace about nearly 80 metric tons of pesticides. To understand this number, for example, in Tamil Nadu, we use about 1,850 metric tons of pesticides every year, putting back into the land. And right now, to get organic food and to make sure our water table is safe and secure, we must replace these pesticides and introduce a new method of organic farming to our farmers to make benefits out of it. So we made sure that this insect repellent is sold at such a cheap price, but a very good quality product. For example, if a farmer is using about 1,000 rupee worth of chemical at a time to spray in his rice farm, he would be hardly spending about 100 rupees, which is very profitable compared to the chemicals. He's financially benefiting out of it. At the same time, he's protecting the ecosystem. He's not going to damage the water table, because we feel as a startup, we felt responsible for the damage that was done already. We need to take steps to change it in whatever way it is possible. Starts with replacing the pesticides, and we always thought about making sure our business model is completely circular. And we made sure there is no waste in our production. So, in fact, I would proudly say we are the first textile manufacturing company who's selling the effluent. Most of the textile companies have to pay to clean their effluent. Now we make money out of the effluent. And there are a lot more character to this plant.
I don't know whether you could, can you put some pictures of this plant? I don't know whether you can put the pictures, Aditya. So this plant is called in different names. In North India, it's called as aak, and they make garland for Ganesha also out of the same plant. You would have seen this plant everywhere on the roadside. It's quite a special plant, and it's a Shiva's plant. And none of us have used it so far, and we are the first company to start utilize this plant and completely innovate it to a complete sustainable product. And one thing I would always say when you think about innovation and new company, starting a company, thinking about environment is very, very important. That's what was bothering me when I was growing up, born in a textile community, that we are constantly polluting. Considering 90% of the textile 300 years ago was produced in India, and it was distributed through Silk Route. And considering that 90% of the world's clothing went from India, and from there we are in 25% now. We basically brought the civilization as we see today, and I'm very proud to have come from the family of weavers who has done this job for nearly 1,000 years. But I'm also ashamed of the fact that we are called the polluters of the world. We must change this, and innovation is everywhere. And so far, I was even surprised until 2017, people have not even noticed this plant. And it is, they've done researches, everyone has put in their part. I would say, I've taken the breadcrumbs from everybody. Everybody, researchers, helped me to innovate this in much more better way, because everybody has shown me an insight. Because at the beginning, when I started this research, there wasn't one aspect of this plant. They say, oh, it's very highly toxic, don't go close to this plant. But when I was reading through many research papers, there was a scholar who researched an aspect of this plant that they used 30% of calotropis, dry calotropis, as a mixture of food, along as a fodder for goats. So that research proved the point that when you dry this plant, the toxicity of the plant degrades, and it is much more safer to be used in the food, the crops and farming sector, where the toxicity can be reduced and degrade in the sunlight. So a lot of these research papers have showed a path for me to, figure out how we can do this sustainably and to understand this plant more holistically. And when once we finished inventing the fabric, another problem was how are we going to do the after processing, like natural dyeing? And that became a big trouble. So we had to figure out a way of how to do our own natural dyes into our process. And natural dyes are mainly made from tannins. And tannins are naturally produced in the plants to repel the insects, because the seeds needs to survive. Whether the animals, among all the odds, it needs to survive for the future generations to grow. So we had to make sure that all our plant-based dyes are tannin-based dyes, and which are made from kaduka, myrobalan, madder, and katachu, acacias, which are very highly tannin content plants, so that whatever water we are using for the dyeing is also used for the repelling, product. So our entire water is 100% sustainable. We have zero waste model. And what the brands, when the brands started listening to our story, we did not go and approach a lot of brands. The only thing we told when the brands came into our, asking for fabrics, we made sure they're not going to put any chemicals into the fabric. We said, you either do natural or no fabric for you. So we put our standards front, and we said, we're not going to sell our land. Mother Earth is not here for sale. So we have to consider every aspect of our process. We made sure that after process of our fabrics is also 100% chemical free. And it is possible to create a zero impact project, if possible, a positive impactful project,
So that's what we thought when we started this project. And when we started with the fibers, we never thought that our journey would be a part of journey changing land and free the farmers from pesticide, crutches. A lot of companies, pesticide companies, are forcing the products into the farmer's land and with the expensive pricing. For example, like every year, cardamom farmers would spend about like 1.5 lakhs per acre to get a good yield, just on the pesticides and the spraying. With our help, all these farmers have shifted from cost of 1,50,000 rupees down to 25,000 rupees, which means so much of money you could save. And it's not just about saving money for the farmers, because like we are talking about becoming organic India and everything. And where I see how fast we can become organic is by providing these solutions to the people, to the very people who are working for our food and our ecosystem. This is very important. I think that's where the future generations are going to be working on. You're going to be engineers working on agricultural machinery. You're going to be developing designs for agricultural models and many things which is directly connected to the land. And it's very important to make sure that whatever we do will not have a negative impact on our ecosystem. This is very crucial. And coming from the textile industry, I could see that already there is a very high demand growing, considering there is a lot of, demand from the world market on a vegan alternative for wool, considering that, wool is coming from a plant, animal source, and it is very harmful to grow sheep, and it damages the ecosystem. There's a lot of ripple effect when it comes to wool industry. So there is quite a lot of demand growing when it comes to our product. And I see that, Calotropis being a pioneer plant, we don't need water to grow this plant, and there is no need of fence, and there is no need of bore wells even, because if we plant it right on time, it can grow well. So that's what we're working on, establishing this model in the dry lands where we produce the insect repellent and vegan wool and create the market and economy around it, and supply the pest repellent for farmers who are producing food. So it did not come in one single day, this whole model. At the beginning, I was so excited about only the fiber. I was not thinking through the whole project, but I was always envisioning as this has to be a zero waste project, and that was my starting point. And that pivoted me to the moments of doing research with the leftovers of the plant extracts into different farms and trying out different things. My research is never going to end. I don't think it's going to end for next 20, 30 years, because you can see the cotton industry being a $30 billion industry, it never ends evolving. There's always research happening in the field of cotton and so on. Like the same way, being the pioneer plant that it can grow without water, and it can grow without the fence and no bore well. And literally all the farmers who never grew anything on their land without the water, like basically without water you can't do any farming. And this plant can grow without anything. So a possibility of growing all these dry lands and to capture carbon through it, at the same time creating an employment. Because most of the time when they finish this, there is season of, in our country there is like 3 to 5 months of season of farming. We don't do continuous farming in everywhere. So when they finish that farming, and all the farmers go to look out for a job in the cities, which is a shame. Like they don't have resources. Government is trying to create employment in different rural areas and everything, but they're not able to do it. It's not possible for the government alone, like your Chancellor mentioned. It's not possible for the government alone to create these opportunities. We have to think about how can we create employment in the times when they don't have. But that's where Calotropis fills in perfectly, because we have 2 different fibers from this plant. One is the pod fiber from the month of March. It grows until month of September.
basically in the summer season where farmers never have any kind of job. So they can grow this at that point of time. When the rainy season starts, they can start to process the stem fibers, which also provides another kind of fiber. So with this one specific plant, we can provide the job until they start the rabi crop or kharif crop, the 3-month to 5-month crop that they're planting. So with this, farmers can work all throughout the year for 12 months compared to what they're doing right now for 3 months. So this really excited us, the potential of this plant and the investment. It doesn't require much, to do this entire, process in each district, that it can provide press repellent for the communities where they're growing food from the dry regions. So it feels like a complete fit. So it's kind of, at the beginning, when we started this project, there were a lot of challenges. Obviously, when you start something new, there's going to be challenges. And without a challenge, life won't be interesting. And when you start your life over here as the first years, it would be fun. We just finished our schools. We're entering into the college. Let's have some fun. There comes the serious life. Kicks in after the 3rd year to 4th year, You will come to the reality of life, where you'll have to figure out something, figure out your resources. But what I find, like, meetings and programs like this will give you a limelight of what, or will probably give you a slightest of spark, probably, to figure out what you want to do in your life. And attitude is very important. Whatever you do it with the right attitude and you'll get to places. And don't think about failures is going to drown you down. Failures are the stepping stones, and every failure is a step to another success in your life. Just be happy and be curious and ask a lot of questions. It's very important. Thank you so much for the opportunity. Thank you so much. Thank you very much, Gauri Shankar sir. It's indeed honor for us to hear about the process of innovation, and really I assure that it will be helpful to our student friends. One announcement for the students who are making movement at the back end of the stage. Please, students, volunteers are requested to control that. And one small announcement, we have a musical fest after this session, which will represent the unity of Bharat, the unity of MITWPU. So kindly grace that occasion. Students are requested to grace that occasion. We are moving to the next speaker of this session. It's indeed honor to welcome her. Dr. Bhargavi is a noted mental health activist in India. She is the managing trustee of the Bapu Trust, which is the organization that was founded in 1999, dedicated to the research and activism of mental health issues, which was considered as the first OPD of the persons with psychosocial disabilities in India. She has written various books and articles in medical journals like Mental Health from a Gender Perspective, Mental Health of Indian Women, Depression and the Use of Natural Healing Methods. To bring her learnings to the world, she has started TCI, that is Transforming Communities for Inclusion, by traveling and sharing resources with other countries in Asia Pacific. TCI has now global OPD working to realize the full human rights of persons with psychosocial disabilities. The mission is to create an inclusive psychosocial and well-being of the individuals, creating the supportive environment for the persons with psychosocial disabilities. May I now request Dr. Bhargavi to come on the dais
and address the gathering. Dr. Bhargavi Dayal. Let us welcome with a huge round of applause Thank you so much. It's such an honor to be here in MIT World Peace University. Thank you for inviting me here to engage with young people. I'd requested for a video about the work of the BAPU Trust, so if that may be played at this point. For the last 10 years, BAPU Trust has been working for urban community mental health in a few inner city slums of Pune. Pune district is one of the 35 districts of Maharashtra. Pune has a population of 10 million people. 42% of the city population live in the slums. There are over 550 slums in Pune city alone. The slums are the foundation of city life, providing all basic human services. Each slum has a unique character, depending on cultural, historical, social and economic factors, civic facilities, migrant status, kind of housing, density of population, social support systems or social capital, and everyday living problems of people determine their quality of life and psychosocial experiences. Indian mental health system is focused more on mental institutions using traditional methods of institutionalization, segregation and treatment without choice. We wanted to develop a program that will respect the personhood, dignity and choice of person with psychosocial disabilities. The entrance of United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities, UNCRPD in India in 2007 was significant in reviewing and redesigning our program. Article 19 of CRPD compelled us to think about transforming communities for the inclusion of people with psychosocial disabilities and to see the right to mental health care as a part of community development. Article 19 provides the right to live with dignity and choice in the community. People with disabilities have the right to choose their place of residence. They should not be forced to live in an institution. The government at every level has an obligation to provide a range of services in the community. We have a vision to create sustainable mental health in low-income communities through integrating psychosocial health into community development. A core objective of this program is the inclusion of people with psychosocial disabilities. We do not assume that families and communities can naturally give care and support. We enable communities to do so by providing information, knowledge, and skill sets. It is possible to multiply and increase emotional resources in the community through inviting all actors and agencies in the community to participate. This is our main practice. In this way, we enable people with psychosocial disabilities,
especially those with high support needs, to be fully included. When we began in 2005, an expert psychologist would visit the communities once every week. She provided counseling and psychotherapy. But there was an imbalance between community and service provider. It was an expert-driven model. For people with psychosocial disabilities, there was only medical care. Now, we have a nested program linking mental health care, community development, and inclusion. We aim to transform communities on principles of inclusion. It has taken us 10 years to experiment and innovate. Patience, faith in community, new knowledge and practice takes time to develop. Thank you so much for that. Gauri Shankar ji started his speech by talking about how his idea for a new world in agriculture and dyes and creating fabric started very young in his life as a child, watching the degradation and the pollution. Pollution is not only of natural resources, it is also of human resources. How do we pollute ourselves so that we can harm others, we can be angry with others, we can be, so how do we pollute our emotional environment? This came to me when I was a child of about 5 to 6 years old, and I used to often visit my mother in the local mental hospital in Chennai. It is an asylum type prison, and I have seen my mother being tied up, being given electroshock treatments, being given extraordinary amount of psychotropic medication. This is first generation, so on and so forth. And for me, this was very, very harmful in my life. So in my mother's honor and in her memory, to honor the number of suffering she went through, not receiving proper care, love and affection, and human connection in her life, I started the Bapu Trust. For many social innovators, life is like this. You go through something very hard, and then you say that you have a vision to change the world. Bapu Trust was started imagining a world where cages and institutions, asylums and prisons for persons with mental health issues do not exist. At that time, we had no idea that we will be working worldwide, but definitely we wanted to change the policy scenario in India. So Bapu Trust is based on the idea that human emotions, just like soil, energy, water, electricity, the solar power, like that, human emotions are an energy form that must be nurtured, that must be conserved, that must be shared in plenty, and that must bring people together, not divide them in conflicted situations. And Bapu Trust work, which is in about 50 slums of Pune today, and in different states of India, we also working in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, rural Maharashtra, takes this idea forward of creating sustainable psychosocial ecosystems and helps people to understand how to cultivate this in their own lives, how to be devoid of suffering, how to bring small ways of keeping ourselves happy and others happy around us. There is one line in the video which says that giving care, giving love and affection is no longer something which is intuitive in us, which is something which is inherent in us. We have to now start reviving this
And we have to start now practicing this on a day-to-day basis. I'm seeing the milkman. When I take the milk, should I give him a smile or not? The gatekeeper is opening the gate for me every morning and every evening. Should I wave at him and say hi? You know, these are the small things. Our vegetable vendors, the people around us, our neighbors, are they our support system? Will they come to us when we provide them, when we need them? And will we provide them with, support when they have a need from us? So these are day-to-day things that can build up the psychosocial ecosystem. Coming to the idea of social innovation, at the time when we started, that was 20 years ago, this was a wild card. Nobody believed us. Nobody gave us funding for this. Because people were used to, okay, patient, depression, take your antidepressants, you'll be fine. But there is no magic pill for happiness. We have to cultivate it in our lives through small, small ways and means. The Bapu Trust depended on certain donors and some fellowships. At that time, we did not have CSR. We did not have, angel investors, venture capital, all of this. And even now, we are not supported by that kind of business money. It's run purely on a non-profit model, which is quite a challenge for us. However, we managed to do this for about 23 years. And so we are very proud of that achievement. So there was the spirit of volunteerism and community service 20 years ago. I find that a bit missing these days, as mental health is a billion-dollar industry, including in India. And so how will our model sustain over the futures? We are not very sure. But as the rich become richer and the poor become poorer, there will always be populations who will need us and people like us. So we are cultivating partnerships as a way of spreading our social innovation into other areas of work. And so right now we have developed training modules, we have developed core curricula on how to practice inclusion. What does that mean? And how to practice it in vulnerable, marginalized communities. So for example, we are working in Bastar area, in Chhattisgarh, Bilaspur areas. These are tribal areas, conflict affected, and there is no scope of any kind of business model for mental health in these areas. So we take our humble 8-point framework recovery model, and it has certain elements like what kind of foods to eat, what kind of sleep hygiene to follow, how to communicate and build a support system within the family, how to manage anger, how to reduce conflict, how to address all health issues. I'm not sure if, how many of us are aware, but even anemia, severe anemia, and of course many poor people, especially women, suffer from anemia. It can really bring down the mental health of people. So how to address health issues in a comprehensive manner, how to do basic peer support with each other, and so on and so forth. So we do a lot of this kind of thing through a module which we developed called the 8-point recovery framework. And it is this module which we take to different communities in India. We're also working in Sri Lanka and Nepal in small pockets. These are all small pockets. You might have heard the word local. We take these small experiments done in different places in India and in Nepal, and we then put it into the international policy framework. So we've had some successes there. The international community is listening to us, saying that we should bring down institutions, and in its place we must put up communities of care. So we call it circles of care. How do you create small pockets of care within, say, one basti where 30,000 people live? So in this way, we have created evidence base for building communities of care. So I was telling my daughter that whatever you do it for 20 years and it will be a success.
Now, how do you do that as social innovators? What do you do, for? So first of all, there would be a pilot phase. We heard about challenges faced. We also faced many challenges. Particularly, they said that poor people need roti, kapda, or makan. They don't need mental health. But this proved to be a false assumption. They, of course, need more mental health services than people who don't need roti, kapda, or makan. And so, piloting the program, understanding the process, developing what is your standard operating protocols, what will you do, what will you not do, what are the ethical questions which come up for you in your program. So these are some of the things to really consider and develop. And then there will be the question of scalability. Okay, you've done this. People told us, you're all heroes. We have seen your evidence base. It's great. It will work in your community here in Pune. It will not work in it won't even work in other slums. We proved that to be wrong. We multiplied our program in 15, 20 different slums. Then we took the program to Chhattisgarh and Madhya Pradesh in completely different demographics, conflict, semi-urban, rural areas, agricultural. We took it to many places. So we showed that our process is scalable because we had iterative learning process. We kept studying and studying and studying our program, tweaking it for different contexts and populations, and seeing what works, what doesn't work. So documentation, record keeping, and developing systems that capture the learnings, and then to go back and tweak the program. This is so important for social innovations to be sustainable in the long term. So what do you need to, first of all, you need a story on which you can peg your whole life, not just this education or that education, this discipline or that discipline, this job or that job. You need a story that can keep you hooked for your whole life, pursuing that purpose. What is the purpose? You need mental and physical stamina to keep going no matter what. You just keep going. Third, you should be able to see, touch and feel the communities that you're working with so that you know what is the impact of your work on those communities. You need care and empathy. Remember, I talked a lot about creating caring communities. You need to be at the center of that, creating such communities around you. Wherever you are, it's not just in your program, it's in your home, it's in your work environment, it's among your colleagues, it's in the communities you serve. Wherever you go, you have care and empathy. Work with your heart as well. Many of you will be working with your minds, your brains. Also work with your heart as much as possible. Fitness and food, this is, at the age of 60, I can say that one long-standing friend for you will be if you focus on food and fitness. Try not to have this thought that, okay, I'll come to it when I'm 50 years old, but already it may be too late. The way, we've heard about degradation of soil, water, food. So, so thank you so much for that. I hope this has been useful for you. All the best with your futures. Thank you. Thank you very much, ma'am. It's indeed honor to hear you. You are a real example who has done life beautiful for others. We are moving towards the third speaker. It is said that some people believe in telling stories, but some people believe in doing things about which stories will be told in times to come. I remembered few lines in Hindi. तो अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना.
अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तो अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। So in line with this, the other set real life examples who have done their life beautiful for others. Now I'd like to take an opportunity to introduce our third guest, a man with vision, mission and ignition. Mr. Mansuk Bhai Prajapati is a small town man with big dreams of ruling the world. MITWPU is an attempt towards the connecting mankind more irrevocably with clay and soil. Mr. Prajapati aims to refresh the memories and remind people about the benefits and uses of clay products. His notable creations include MITWPU, non-stick clay tawa, and low-cost water filter. MITWPU covers a range of eco-friendly clay-based products that are both functional and sustainable. It includes MITWPU refrigerator, which was the first concept step in setting up a house of innovation. He has started his business with 30,000 rupees, and right now his basket is full of varieties in earthen cookwares, earthen pots, tablewares, earthen refrigerator, MITWPU special and essence sticks, etc. Today, he is a successful entrepreneur renowned for modernizing traditional craftsmanship and inventing innovative products with the potential to benefit people nationally and internationally. So, may I now request Mr. Prajapati sir to come on the dais, and before that, may I request our technical team kindly relay a small film on the life and work of Mr. Prajapati sir. Ever heard of a clay refrigerator that runs without electricity and yet keeps food items fresh? Gujarat's Mansuk Bhai Prajapati built this simple machine that does not run on any artificial energy and therefore has no recurring costs. Mansuk Bhai Prajapati has brought back earthenware to the Indian kitchen by making refrigerators, cooking tawas, pressure cookers and filters with clay. For decades, he has been transforming traditional clay items into an innovative range of products. After the success of the clay refrigerator, the rural innovator launched his company MITWPU, which has so far created over 250 different clay products. But Mansuk Bhai's journey to fame wasn't an easy one. He was exposed to traditional clay making in his childhood. He grew up watching his family members make earthenware on a pottery wheel. Being exposed to dust and smoke all day, his grandfather and brothers developed breathing issues and died very early. Due to the fear of health and the stigma attached to traditional pottery, his family shifted to masonry. After switching multiple odd jobs, he took a loan of Rs 50,000 to step back into the world of earthenware with a tad bit of innovation. He started making clay tawas using a tile press instead of potter's wheel and managed to make 3,500 to 4,000 tawas every day. Traditional potters could only make 100 tawas per day. People loved his work. But the 2001 Gujarat earthquake destroyed all his clay products. He took another loan, this time of Rs 19 lakh. After 5 years of dedicated work, he had his clay refrigerator ready and the word spread. Mansuk Bhai was invited to IIM Ahmedabad, where he received an order of 100 fridges and met APJ Abdul Kalam, who appreciated his hard work. He even got a patent on his fridge. His next innovation is going to be a clay house that can stay cool without an AC. And we are looking forward to it. हम सबको बस स्वदेशी अपनाना है और मिट्टी के प्रति अपनापन दिखाना है. Let us welcome with a huge round of applause Mr. Mansuk Bhai Prajapati.
हेलो, सबको नमस्कार, मेरा प्रणाम। जय जय गरवी गुजरात, जय महाराष्ट्र, जय भारती। આમાંથી ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ ગુજરાતના હશે, તો ગુજરાતી બોલવા માટે મને 1 મિનિટ બહુ સારું લાગે છે કે આપણા ગુજરાતના સ્ટુડન્ટ અહીંયા MITમાં ભણે છે, એ બાબત ખૂબ જ ધન્યવાદ। MIT वर्ल्ड पेस में आज मुझे विश्वनाथ सर और राहुल सर का आमंत्रण मिला है और आज MIT के सर्वे स्टाफगण ने हमें अच्छी तरह से यहाँ इनविटेशन और इनवाइट करके एक अच्छा प्रेम दिया है। तो आज मैं एक छोटी सी मेरी जर्नी बोलूँगा कि ये सब जो आपने अभी देखा कि हमने इनोवेशन जो किया है एक मिट्टी में से किया है। एक इनोवेशन जो हमारे माइंड में आता है और जो करते हैं इनोवेशन को आगे ले जाते हैं उसको हम इनोवेटर बोलते हैं। अगर सक्सेसफुल हो गया तो हमें इनोवेटर बोलते हैं, अगर हम फेल गए तो हमें पागल बोलते हैं। लेकिन हमारा मकसद है इनोवेशन कोई भी फील्ड में आता है। तो मैं तो एक कुम्हार हूँ, तो कुम्हार का काम है मिट्टी का बर्तन बनाने का और मिट्टी में से कुछ नया सोच करके उसको आगे ले जाने का। तो हमने एक छोटे से गांव में, मेरा पिताजी एक मिट्टी का बर्तन बनाते थे, लेकिन उसमें क्या थी कि बहुत दिक्कत थी, ज़्यादा प्रदूषण था, क्योंकि गद्दे के ऊपर मिट्टी लाने का और इसको तोड़ना और टिप टिप के बड़ा करने का होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रदूषण की वजह से और ज़्यादा मेहनत की वजह से जो हमारा कुम्हार काम है वो धीरे धीरे कला लुप्त हो जा रही थी। मेरा फादर ने भी छोड़ दिया था और मैं अकेला एक ही लड़का था। तो पापा ने सोचा कि एक बेटा है तो उसको ये काम पर नहीं लगाने का है, उसको तो कुछ कोई भी जगह पे हम पढ़ाकर सर्विस में लगा देंगे। लेकिन मैं 10th में फेल हुआ तो पापा ने मुझे भी ये कंस्ट्रक्शन का काम, मतलब मिस्त्री का काम में उसके साथ लगा दिया। मिस्त्री का काम में मुझे मन नहीं था, मुझे तो मेरा मन था कि कुछ हमारी जो परंपरा जो लुप्त हो गई है उसको कोई भी तरह से आगे ले जाने का है। लेकिन पापा की थोड़ी भी मर्जी नहीं थी। लेकिन मैंने बहुत जिद की तो मुझे एक चाय का गला मुझे बना दिया और इसके बाद मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं लगा। तो मैंने 5 साल तक एक कवेलू, मतलब रूफ टाइल्स जो बनती है गुजरात में, रूफ टाइल्स की फैक्ट्री में मैंने 5 साल तक काम किया। और वहाँ एक लाला जी था, वो इंटरेस्ट पर पैसा देते थे। तो मैंने उससे 30,000 रुपया लेके हमारा जो खुद का पारंपरिक बिजनेस है उसको हमने फिर से स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा मशीन बनाया, मतलब तवा बनाने का एक हैंड प्रेस बनाया, दिमाग से डाई बनाई और छोटी सी जमीन लेके हमने हमारा काम शुरू कर दिया। लेकिन हमने सोचा कि ये काम को किस तरह से आगे बढ़ाऊं। तो हमने क्या किया कि ये काम को नेक्स्ट जाने दीजिए भाई, वापस। हाँ, तो मैं 10th में फेल हुआ, बाद में मैंने ये चाय का गला किया। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट हाँ, एक तवा बनाने की मशीन बनाई और वो हाथ से दिमाग से बनाया और इसमें 1.5 लाख तवा टूट गया। इसके बाद एक दिन ऐसा आया जो हम कुम्हार लोग हाथ से सिर्फ 100 तवा बनाते थे, तब मैंने 3000 से ज़्यादा तवा बना के हमने ये मशीन में सफलता पाई थी। ये सबसे पहला मेरा इनोवेशन था। नेक्स्ट, इसके बाद जब हम गांव में रहते थे तब तालाब से, कुएं से पानी पीते थे। तो हमने सोचा कि ये तालाब में, कुएं में बहुत सारे पशु पक्षी सब पानी पीते हैं और कुएं में देखो तो बहुत पक्षी भी अंदर गिर जाते हैं, मर जाते हैं, कचरा होता है। तो इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, हमें साफ पानी कैसे मिले। इसलिए हमने
एक नया इनोवेशन करने का सोचा कि जब हम मटका में पानी पीते हैं तो मटका में क्या होता है, जब पानी जवते हैं मतलब थोड़ा थोड़ा निकलते हैं तो ही कूलिंग होते हैं। तो हमने इसके ऊपर से एक आइडिया लिया कि भाई हम एक फिल्टर क्यों नहीं बनाए, ये मटका में जो पानी निकलता है तो साफ पानी करने के लिए क्यों नहीं बनाते। तो हमने एक छोटा सा मटका के अंदर 2 कैंडल बना के एक रख दिया और एक के ऊपर एक 2 कैंडल है, फिल्टर बताओ भाई नेक्स्ट। हाँ, इसी तरह से हमने फिल्टर बनाया कि ऊपर के हिस्से में हम पानी भरेंगे, पानी फिल्टर होके नीचे के हिस्से में आएंगे, तब पानी साफ मिलेंगे। क्योंकि आज हम आरओ प्लांट का तो पानी पीते हैं, लेकिन सभी के पास आरओ प्लांट नहीं होते, छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे लोगों के पास नहीं होते। तो साफ पानी किस तरह से मिले, इसके लिए हमने 95 में ये फिल्टर बनाने का इनोवेशन किया था। नेक्स्ट, गुजरात में 2001 में अर्थक्वेक आया और हम कुम्हार लोग ठंडी की ऋतु में इकट्ठा करके रखते हैं मटका को और गर्मी की ऋतु में बेचते हैं। तब अर्थक्वेक की वजह से ये सारे मटके टूट गया। तो हमारे एक पत्रकार ने लिख दिया कि गरीबों का फ्रिज टूट गया। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि गरीबों का एक स्वप्न होता है कि हमारे घर में फ्रिज है तो बहुत अच्छा, लेकिन गरीबों के पास फ्रिज लेने का पैसा नहीं होता है, बिजली का बिल भरने का भी पैसा नहीं होता है। तो हम सही में एक फ्रिज मिट्टी का क्यों नहीं बनाए। तो हमने 5 साल तक लगातार मेहनत किया और एक मिट्टी का मैंने एक फ्रिज बनाया जिसका नाम हमने रखा मिट्टी कूल। ये मिट्टी कूल में सिर्फ यही खासियत है, नेक्स्ट, जिसका नाम मिट्टी कूल रखा। नेक्स्ट, ये फ्रिज बनाने में मेरे ऊपर 19 लाख का कर्ज हो गया, लेकिन तब तक मुझे सफलता नहीं मिली थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं छोड़ी। हर स्टूडेंट को यही मैं बात करता हूं कि कितनी भी दिक्कत आए, कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन आप जो इनोवेशन कर रहे हैं, आप जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं करने का। कोई भी एक दिन ऐसा आएगा, हिम्मत के बिना कुछ नहीं मिलता। तो आपको देखो, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने एक ये मिट्टी का फ्रिज बनाया है, सिर्फ ऊपर के हिस्से में पानी भरने का, और पानी फिल्टर होके ठंडा होके नीचे आता है। वो पानी हम पी सकते हैं, और अंदर रखा हुआ सब्जियां और फ्रूट, नेक्स्ट, सब्जियां और फ्रूट 5 दिन तक फ्रेश रहते हैं। ये बिजली बिना चलने वाला रेफ्रिजरेटर है। लेकिन सफलता तो मिल गई, लेकिन मेरे पास अभी आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तब ये IIM के प्रोफेसर अनिल गुप्ता है, उसकी एक संस्था है ज्ञान सृष्टि हनीबी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन करके। उसने मुझे ढूंढा और ढूंढ के बोला कि मनसुख, तूने अच्छा इनोवेशन किया है, तू आगे क्यों नहीं ले जाते हैं। तब मैंने बोला, सर मेरे पास रहने के लिए मकान था, वो भी मैंने बेच दिया है, खाने का भी पैसा नहीं है। तो ये बोला, नेक्स्ट, वापस ले लो, ये फ्रिज लेके आप अहमदाबाद आओ। तब मैं अहमदाबाद गया इसके पास, और उसने मुझे बिना पूछे सिर्फ 2 लाख रुपया ऐसे ही दे दिया, और ये बोला कि आप आगे जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बाद में इसने मुझे इसका पेटेंट भी करवा दिया। नेक्स्ट, इसके बाद एक दिन मेरा वाइफ मुझे बोला कि बाजार से आप नॉन स्टिक पैन लेके आओ। तो मैं सोचा चलो लेके आओ। बाजार में गया, 450 रुपया बोला। तो हमने सोचा इतना महंगा नॉन स्टिक पैन कहाँ से मैं लूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो हमने सोचा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने ये मिट्टी के तवा के ऊपर फूड ग्रेड कोटिंग ढूंढा, और ढूंढने के बाद हमने हमारे दिमाग से एक प्रोसेस किया, और ये तवा मिट्टी के ऊपर हैंडल लगाया, और ये तवा को हमने, ये बात है 2005 की। 2005 में हमने ये स्टार्ट किया, तब सिर्फ 25 रुपीस में बाजार में रख दिया, और ये मिट्टी का नॉन स्टिक तवा है। नेक्स्ट, आजकल हम खाना खाते हैं, लेकिन खाने का टेस्ट हम भूल गए हैं। हम देखते हैं छोटी उम्र में आंख में नंबर आ जाता है, हेयर वाइट हो जाते हैं, हड्डी का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें खाने का सही तरीका नहीं पता है, सही ढंग से बनाने का आइडिया नहीं है। पहले के ज़माने में मिट्टी की हांडी के अंदर खाना पकता था, और जो हांडी के अंदर खाना पकता था, तो ये मिट्टी हमारी माँ है। ये ज़मीन में देखो तो सब फसल उगते हैं, और जितना सोने चांदी जो कुछ मिनरल्स है वो सभी मिट्टी में होता है।
तो ये मिट्टी की हांडी के अंदर जो खाना पकता था, इसका टेस्ट आज जब जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो वहाँ एक के हांडी के ऊपर एक हांडी, ऐसे 7 हांडी के ऊपर जो प्रसाद बनते हैं उसका टेस्ट आप एक बार खाने के बाद पता चलते हैं। हमारा बुजुर्ग है वो 100 साल तक ऐसे ही बोलते हैं कि हमें कोई भी प्रकार का रोग नहीं होते हैं। तो ये क्यों नहीं होते थे? क्योंकि हम मिट्टी के हांडी में खाना खाते थे। आज के बच्चे को ये कोई हांडी पसंद नहीं है क्योंकि गैस आ गया और स्पीड में खाने का है। इसलिए हमने एक नया इनोवेशन किया है जिसका नाम रखा हमने कुकर। खाने का स्वाद भी मिल जाए और खाने का टेस्ट भी मिलता रहे, और इसी तरह से हमने ये एक कुकर का इनोवेशन किया है। नेक्स्ट, और ये हमने बनाया है काउडंग लॉग मशीन, क्योंकि गाय को हम हमारी माता समझते हैं, लेकिन गाय को हम बाजार में ये चारों ओर घूमने के लिए खाने के लिए रख देते हैं। गाय क्या खाती है? प्लास्टिक खाती है, दूसरा जो कुछ कचरा खाती है, लेकिन लास्ट में ये कत्ल खाने जाती है। लेकिन गाय का दूध अमृत समान होते हैं। लेकिन हमने सोचा कि इसका पालतू, जैसे कि हमारा घर में एक गाय को अच्छी तरह से रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये गाय का गोबर में से हमने लकड़ा बनाने की मशीन बना दिया, दिया बनाने की मशीन बना दिया, गणपति बनाने की मशीन बना दिया, अगरबत्ती बनाने की मशीन बना दिया। तो इसकी वजह से गाय को हम घर में रखेंगे, उसका चारा ज़्यादा देंगे और गाय को हम अच्छी तरह से रखेंगे, इसलिए हमने एक काउडंग लॉग मशीन बनाया। नेक्स्ट, हम देखते हैं आज के ज़माने में दिन प्रतिदिन गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो हमने क्या किया, एक मिट्टी कुल हम हाउस बना रहे हैं। तो हाउस को मकान ठंडा करने के लिए एक टाइल्स बनाया, जो टाइल्स हमारे मकान के अंदर लगा देते हैं तो बिना एसी हमारा जो फैन होता है एकदम कूलिंग, मतलब ठंडा हो जाती है दीवार। पहले के ज़माने में मड का मकान होता है, मिट्टी का मकान होते थे, इसलिए ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। लेकिन आज हम ये हमारा मकान में छत के ऊपर छत होती है, लेकिन बहुत गर्मी होती है तो हम रह नहीं सकते हैं। रेलवे की पटरी के आसपास जो लोग होते हैं वो वहाँ बहुत गर्मी से पीड़ा रहे, तो हमने सबका सॉल्यूशन के लिए ऐसी टाइल्स बना दी है जो मकान का टेम्परेचर को लो करते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये MIT हमारी जो दूसरी MIT है, वहाँ 1 साल पहले हमें एक कलर इन्फिनिटी के माध्यम से, कलर जो इंग्लिश चैनल है इसके माध्यम से यहाँ रिसर्च के लिए रखा गया था कलर टीवी ने। तो हम MIT में ये रिसर्च करने के लिए आया था और वहाँ से हमने बहुत सारा सपोर्ट मिला, और ये दीवा ऐसा बनाया है कि नवरात्रि आ रही है, अभी गणपति चल रहा है, तो क्या होता है, ऊपर के हिस्से में दीपक में तेल भरने का, ऑयल भरने का होता है, और ये ऑयल भर के दीपक का ऊपर का हिस्सा को इस तरह से रख देते हैं हम। और जब हम यहाँ रुई की वाट लगाते हैं तो वाट जलाते हैं तो ही ऑयल धीरे धीरे टपक टपक के आते हैं, और अगर वाट को हम बुझा देते हैं तो ऑयल नहीं आते हैं। इसको हमने अखंड दिया बना दिया, जो हर घर में नवरात्रि में, दीपावली में और कोई भी अच्छा हमारे त्योहार के लिए हम ये नया एक मिट्टी का दीपक का इनोवेशन किया है। नेक्स्ट, हमने चम्मच से लेके रेफ्रिजरेटर तक 721 प्रोडक्ट बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, हाँ, आपने देखा कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने मुझे 2007 में, मैं ये रेड लाइन आपको बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा अवार्ड की लाइन है और टाइम हमारे पास नहीं है, तो ये अब्दुल कलाम साहब ने मुझे साइंटिस्ट का बिरुद दिया। नेक्स्ट, प्रतिभा देवी पाटिल साहब ने मुझे एक अच्छा इनोवेटर का अवार्ड दिया है, सम्मानित किया है। नेक्स्ट, अमित शाह जी और हमारा मोदी साहब ने भी मुझे सम्मानित किया है ये प्रोडक्ट को आगे ले जाने के लिए। नेक्स्ट, और ये फोर्ब्स मैगजीन इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल रूरल एंटरप्रेन्योर के नाम से मुझे फोर्ब्स मैगजीन में नामना दी है। नेक्स्ट, जाने दीजिए। हाँ, ये IIT चेन्नई ने मुझे, IIT मद्रास ने ग्रास रूट इनोवेटर का अवार्ड दिया है। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक टाइम्स में
ये मैं 10th फेल हूँ, मैंने बोला, लेकिन IIM और GTU के माध्यम से मुझे प्रोफेसर की डिग्री दी गई है। नेक्स्ट प्रणब मुखर्जी साहब ने मुझे 15 दिन का राष्ट्रपति जी का मेहमान के रूप में राष्ट्रपति भवन में रखा था। नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट जाने दीजिए। नेक्स्ट, ये पैडमैन मूवी शायद आपने देखा होगा, पैडमैन में भी मुझे अवार्ड मिलता है, अक्षय कुमार को नहीं मिलता है। नेक्स्ट, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति में मुझे एक मेरी स्टोरी बताई गई थी। नेक्स्ट, विवेक बिंद्रा जी ने भी बड़ा भारत शो में मुझे बताया गया था। नेक्स्ट, हाँ, ये यहाँ का ही वीडियो है, हमने यहाँ। नेक्स्ट, ये कलर टीवी का मैंने बोला कि MIT की वजह से मुझे 10 लाख का प्राइज मिला था। आज भी MIT में मैं खड़ा हूँ। देखो ये MIT ने मुझे कितना दिया है, सपोर्ट मिला है MIT की वजह से। नेक्स्ट, ये अभी एक विश्वकर्मा योजना बाहर पड़ी थोड़े दिन पहले, 15 अगस्त के दिन, तो तब भी मुझे प्रधानमंत्री साहब ने विश्वकर्मा के उसके लिए एक सिलेक्शन के लिए मुझे बुलाया गया था। नेक्स्ट, ये पहला है कि मुझे BIS स्टैंडर्ड हमारे प्रोडक्ट में कभी कोई को नहीं मिला है। ये भारत में फर्स्ट लाइसेंस मुझे BIS स्टैंडर्ड मिला है। नेक्स्ट, ये अभी कलेक्टर साहब ने मुझे 15 अगस्त के दिन सम्मानित किया है। नेक्स्ट, हमारे यहाँ 250 से ज़्यादा महिलाओं को रोजगारी मिल रही है और पूरा भारत में कम से कम 10 लाख से ज़्यादा परिवार को ये काम के पीछे मैंने लगा दिया है। जो कला लुप्त हो गई थी, इसके फिर से जीवंत करने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे यहाँ इंटर्नशिप के लिए आ रहे हैं। अमेरिका की हार्वर्ड और CBSE और आप देखो तो दिल्ली की 10वीं क्लास की कक्षा और कलकत्ता में 1 से 10 तक सब जगह पे मिट्टी कुल का पाठ पढ़ाया जाता है। थैंक यू, आगे जाने दो। नेक्स्ट, थैंक यू। आज मुझे यहाँ आपके सामने मेरा प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला है। सबसे ज़्यादा मैं MIT का और सभी टीम का आभारी हूँ कि जिसकी वजह से मुझे यहाँ बोलने का एक मौका दिया गया। थैंक यू सर। Let us have a huge round of applause, my dear friends. Thank you. Honorable Mansuk Bhai Prajapati, for taking us through the variety of products. You have showed how the idea can be converted into a real product, and if it is useful for others, definitely it's a commendable job. My dear friends, the forum is open for question and answer session. May I now request my student friends to raise their queries, and the speakers are requested to answer in a concise form. First question is coming from Harshita Rawal. Good morning, sir. I am Rushita from FY B.Tech. My question to you is, what are the challenges you faced in your innovation? And the question is for Gauri Shankar sir. See, when we started Fabog researching on calotropis, the first challenge is always finance. It's all a part of the journey. The challenges are going to be there, every part of the journey. But I find that more interesting to have challenge in life. I would say, like, every challenge we faced, after we finding the fabric, we had to figure out a way how to make a sustainable processing of that fabric.
how to incorporate that into our whole system of making the pest repellent. So there was challenges everywhere. We have to, pivot and make a decision, move forward, and make it a holistic project. So there's going to be challenges. Like I said, it's not going to be interesting life without challenges. Just be ready for any kind of challenges in your life too. Thank you, Gauri Shankar sir. The second question is for Dr. Bhargavi Dawar and is from Sathi Wagole. Very good afternoon, ma'am. I'm Sahil. My question for you would be, what are the various social development activities conducted by the Bapu Trust, and how can we, the students, or as in everyone or anyone, can participate in them? We have a large internship program for students. You can always apply to the organization. Usually we take applications from December onwards. Our innovations, usually when students come in today, psychosocial health also is a professional subject. It's not something that people who don't have any knowledge or aptitude for this can come and join us. So usually we get students from counseling or psychology or social work, development practice, sociology, some of these disciplines, people who have worked with people or have the opportunity to work with communities, they come. And of course, some students have said that they are not, they don't feel comfortable going into the slums. So going into the slums and working with poor communities is a must. That's a value base that we like to cultivate. So definitely students can apply for internships. Thank you, Bhargavi ma'am. The third question is for Honorable Mansuk Bhai Prajapati and is from Samruddhi Patil. Good afternoon, sir. My question to you is, are MITWPU products sustainable? Can you please explain? नहीं, जो आपने पूछा है हमें, ये प्रोडक्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यही हमारी परंपरा थी, यही हमारे खाने पकाने का एक साधन था। इसके लिए हेल्थ और पर्यावरण के लिए, दोनों के लिए अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह से तो हमारा शरीर में जो तत्व की खामी है उसको भी पूरा कर देती है मिट्टी के बर्तन। और हम आपने देखा जितना हमने इनोवेशन किया है, सब सोसाइटी, पर्यावरण और हेल्थ के ध्यान में रखते हुए ही किया है। Thank you, student friends. Now, I now request all the dignitaries to come forward to have a group photograph and requesting you all to hold SLDP brochure in your hands. It will be a picture perfect moment. Thank you. It will be a historical moment forever for us. Thank you all the dignitaries. We'll have a University Connect program. May I now request Dr. Akshay Malhotra, Dean Academics, may I now request Dr. Mridula Kulkarni ma'am, Dean Student Affairs, to guide students related to student affairs.
Dr. Mrudula Kulkarni, ma'am, Dean Student Affairs. Good afternoon, students. Now that you are already on the campus for more than 1 month, you are already aware of many of the activities on the campus, and you have seen the glimpse of the culture of the MITWPU. You have also witnessed the start of SLDP program with a nice cultural program done by our students. So just give you the glimpse of this and to ask you, invite you to participate in all these activities. This is your event. All the events here onwards, they are going to be your events. So your participation, just as you have seen from your elder students, elder alma mater, next time you will be there on the dais. So I invite all of you to be part of these club activities, cultural activities, sports activities, and there will be rural immersion. Since yesterday we are talking about it. हमारा जो दायित्व है हमारी मिट्टी से जुड़ने का, so for that we will be starting with rural immersion program, which is a credit program. You all aware of it, and for that itself we have initiated this program of SLDP. Let us see how we can connect this SLDP awareness and connect with rural development, rural immersion program through the mentor-mentee program, through the co-creation program. And our journey for 3 to 4 years in MITWPU will be the creative journey for all of you. And while you pass out through the portals, whatever we expect from you will be budding technocrats, innovators, researchers, entrepreneurs, and business owners, incubators. So for this only purpose, we are having this SLDP with you. Next, please. So please participate in all the activities. Now, almost all the activities going on around the campus, you are aware of it. Find out your own slot and get into this. Cultural activities, sports activities to showcase your talent. And let me tell you, when you are entering to sports activities, maybe professional sports or recreational sports, professional sports are definitely going to give you the edge over the others. Also examination benefits, and definitely there are extra marks also, some benefits so that you can pursue your sports career at regional level, state level, national level, international level, and bring the laurels to the university. Next, please. So the effect of all these club activities, cultural, sports, and many other extracurricular, co-curricular activities, Technofest. This is for your holistic development as a student who are physically fit, mentally alert, spiritually elevated, and contributing to the social cause as a proud Indian citizen. This is our motto, this is our goal, and this is what our commitment as an educator to you all is. Next, please. So as I told you, you have many competitive type of events where you can participate. Let me tell you, we have a legacy of sportsmen representing at university level, state level, national level, international level, and also there are students who keep themselves fit with the on-campus sports activity. Please excel in that. For cultural activities, you must have heard about Maunantar Karandak, Firodhiya Karandak, Gadakkar Karandak, many other events, and where you have a competition with other university, other institute students also. Find out your own slot and participate into that. And this is a platform you all for excelling or for nurturing your talent and creating yourself a personality that you wish to be. Next, please. While doing this journey, your 24 hours are not enough.
So you will have to plan your activity. So learn the time management because इतना सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, पढ़ाई भी करना है. So for that you need a minimum path. We call it as path of optimization. So to optimize your journey, we are having this mentor-mentee program. Make full use of mentor-mentee situations. These mentors are your guides who will coach you, they will direct you, they will help you, they will train you, and they will help you to take good decisions. Next, please. And for you to have this holistic personality, we have a complete syllabus which is created through the mentor-mentee program. Next, please. Next, please. You will be also taking this co-creation program which we will be talking tomorrow in more details. And in this co-creation, this is in alignment with a rural immersion program where you will see the rural Bharat. You will find out the problem at the rural Bharat where you can contribute depending upon your strengths. And aligned with that is co-creation activity, a multidisciplinary program of 1 credit. And here, after doing this, you will be definitely getting a 1 credit, which is an international credit along with VU University of Amsterdam. Next, please. We have charted a program for you for this co-creation activity, which I am showcasing it here. Next, please. We will be starting in the month of January. Next slide, please. So this is your training calendar for the co-creation program. This is along with rural immersion. The purpose is, let us revise the purpose why we are doing this. So our entire purpose is, first step, let us revise this lesson. You will observe the rural Bharat, identify your area of contribution. In co-creation, you will work in interdisciplinary group as a team member. You will put in all your academic learning, conceptualize, devise the solution for societal problem. And in 3rd year and 4th year, you will develop that knowledge in terms of research, product, business, so that you can contribute for the betterment of Indian society and make yourself as a global presence professionally. So during this path, we are all together and we wish you this journey to be a fruitful journey. इतना सब कुछ करना है तो इसके लिए आलस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तो आलस छोड़ दो और अभी काम पे लगना है. दोस्तों, इसके लिए तो कामयाब बनो. कामयाब बनोगे तो कामयाबी, fill in the gaps. दोस्तों, काबिल बनो, कामयाबी, that's true, झक मार के पीछे चली आएगी. So I will end this with small piece of advice. Alasasya kuto vidya, avidyasya kuto dhanam, adhanasya kuto mitraha, amitrasya kutasya kham. So these are the years to strive yourself hard. Please come forward, fully utilize your potential, your energy, your youth to build your own personality. Let us be together in your journey. I wish you all the best and let us wait for now comes Ek Sur Ek Tal in some time. Before that, we have some 2 more presentations here. Thank you so much. Let's be together. Thank you very much, ma'am, for your guidance. May I now request Dr. Akshay Malhotra, Dean Academics, to address the students. And students are requested that we are going to start a cultural program, Ek Sur Ek Tal, within 10 minutes. A very good evening to all of you. It falls upon me to explain to you, or rather inform you about the USP of academics at your university, MITWPU.
Last time I had the opportunity to address all of you, all our first year students at our induction program. And next slide, please. And if you remember, I showed all of you this slide, that this is what academics at MITWPU is not about. And I hope in the last 1.5 months, we have got ample opportunity to prove me right. And I've kept my promise to you guys that this is what academics at MITWPU is not about. In fact, the last 2 days have given you ample opportunity to see for yourself, to experience for yourself, what is the USP of academics at MITWPU. Another thing I remember telling you is that the very least you should expect out of us is that first job. The very least of our responsibilities is to prepare you for that first job interview. You should, in fact, expect much more from us. What you should expect from us is to prepare you for that job interview that you'll be facing for 10 years from now, 20 years from now, in a field that probably doesn't even exist right now. I mean, 20 years ago, nobody had heard of AI/ML, had they? So what do we know what the future looks like? So how do we go about preparing you for the job opportunity that's going to exist 10 years from now, 20 years from now, the job opportunity that we know nothing about right now? That is the USP of academics at MITWPU, and that is exactly what we do. Next slide, please. We do that at MITWPU by not only preparing you for the first job interview, but by preparing you for life. And to me, that is the USP of academics at MITWPU. Just see the last 2 days. Just the sheer plethora of speakers you have had on stage. I mean, for the inaugural, we had a minister saying, अगर आपके politicians काम नहीं कर रहे तो गाली दो उन्हें, आपका हक बनता है गाली देना. But at the same time, just sitting on the sidelines is not good enough. As educated people, especially graduating from this school, you are expected to contribute even to politics and make a difference over there too. Then we had the founder of Super 30. Forget about what he did, forget about how he did it, forget about why he did it. To me, the amazing takeaway from that session was, one person can actually go about and influence so many lives. Not only lives, so many families. One person can influence so many. The fact that you get to learn all this within your first 2 months at MITWPU is the USP of this place. Most of the universities would say, firstly, I've never seen something like this organized at such scale at any place, but they would say first year students are too young for this. Abhi inko aata hi kya hai, abhi inko sikhaya hi kya hai. But we actually believe right now is when you are at your best, when you are at your creative best. We want you to get exposure of all these people from all different walks of life right within your first 2 months, because whatever learnings you get from this, you have the next 4 years to work in that direction. Ma'am outlined so many measures, so many initiatives that we are taking. All those initiatives are USP of academics at MITWPU, because for us, they are not add-ons, they are not extras, they are very much part of your day-to-day academics. Sir is going to tell you, is going to be talking more about peace studies, so I'm not going to go there. Tomorrow you're going to hear many more speakers actually come and explain to you these USPs in more detail. But I would say right now, right here and now, after 2 days of listening to speakers, you don't need to know the USP of academics at this place. You are actually living the USP of academics at this place. You are experiencing it yourself firsthand. Make the most of these opportunities, make the best of these opportunities. God bless and thank you. Thank you, everyone. Thank you, Akshay Malhotra, sir. May I now request Dr. Milind Patre, sir, Associate Dean, Peace Studies, to address the students.
Very good afternoon, all of you. Friends, the name of the university is Dr. Vishwanath Karad MIT World Peace University. So the name itself suggests that this institution profoundly believes that unless and until we develop an attitude towards peace, we develop a peace-loving inner self within ourselves, and then propagating the peace within and without, then and then only a truly prosperous individual, society, and the nation can be created. We also know that the science and technology alone are not capable of solving human problems. Only when used with balance and wisdom can science and technology truly help us. But how to find the right balance? That is most fundamental. Peace is the fulcrum of that balance. And hence, in MIT World Peace University, since 2017, with the MIT Pune transforming into MIT World Peace University, we have decided as an organization to introduce the element of peace program. Think about a university in which an 8 to 12 credit peace program is mandatorily interwoven into the very academics of the university. It's unthinkable. It has never happened before, and it will probably take eons to happen in another universities. So in a way, feel proud that we are a part of such a university in which, along with the scientific endeavor, other aspects so deep and rich of our ethos and culture are intrinsically blended into the very academics. Look at the sentence, no peace, no life, but that is K-N-O-W. No peace, no life, that is N-O. Absolutely. And you can see the founders of our institutions and our beloved founder, president, and the executive president, whose blessings are there for this peace program. Next, please. Next slide, please. Next slide. Thank you. So, war is always there in the mind. Violence is always there in the mind. Think about you, friends. If you have everything in your life, but you don't have a peace of mind, then whatever we have in our life, whatever we gain in our life, all success looks empty, meaningless. And if we have only a so-called ordinary success in our life, but you enjoy a serene, quiet, contented mind, then you think that probably you are on the top of the world. So what differentiates between feeling that I am a winner and I am not a winner is the inner contentment, inner self of peace and contented mind. And so we try to deal with this inner mind. Next, please. So value-based universal education system, that is the content of our peace program here, because as Mridula Kulkarni ma'am rightly said, that youth which is physically fit, mentally alert, intellectually sharp, spiritually elevated, that is the youth what is needed to run the affairs of the nation and the society in a great way. With the successful conclusion of the G20s in India, now the whole world is looking towards India to show the direction. And who will show the direction? All the youth. And to show the direction means to the path of peace, not to the path of war and violence. And hence, I'll just make a quotation from Bhagavad Gita. Probably it will help you understand. Chapter 2 and the Shlok 66 of the Bhagavad Gita says, and I will read it in English, one who is bereft of self-control cannot attain wisdom. So those who don't have self-restraint, self-control, those who cannot control their minds, they can't attain wisdom. Without wisdom, one cannot meditate. Without meditation, one cannot achieve peace. And without peace, one cannot attain happiness. Everyone wants happiness, but see the link. For happiness, we need peace. For peace, we need meditation. For that, we need wisdom. For that, we need self-restraint mind. And here, when I say meditate, friends, please understand, here I am not saying meditation means close your eyes and chant some mantra. No. Swami Vivekananda, the noble son of India, says, he who can properly prepare a chillum of tobacco can also meditate properly.
So he says for Vivekananda, to meditate means to fully concentrate on one work at a given point of time. When you are totally alert, when you are aware, when you can focus your mind on a particular task at hand, to him, that means you are in a meditation. So it is not related with religion or spirituality as such. It's a day-to-day life. Next slide, please. So yes, all these levels of peace. Next, please. Next slide, please. So in our WPU Peace program, we have aimed in synthesizing, of course, as I said, science and spirituality, peace and pace. Pace is not antagonistic to peace. So those who are at pace does not necessarily to, miss their peace. They both can go side by side. We need money as well as we need mindfulness also. We need technology as well as approach of transcending and going beyond mind and going beyond misery created by the mind, and entrepreneurship and ethics. When we integrate all these aspects, then only we can truly achieve prosperity as well as peace also. Next, please. And so, as you know, friends, some of you might have begun these courses, the courses like Foundations of Peace and Spiritual and Cultural Approaches to Peace, etc. These are the subjects, along with Yoga for Excellence in Life, along with biographies. This is all a part of this, so that we can attain sanity, peacefulness of the mind. Thank you very much, friends, for being here, and I wish you all the best. Thank you. सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा सुर की नदियां हर दिशा से बह के सागर में मिले बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के सुर की नदियां हर दिशा से बह के सागर में मिले बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो
இசைந்தால் நம் இருவரின் சுரமும் நமதாகும். திசை வேறானாலும் ஆழிசை ஆறுகள் முகிலாய் மழை
And welcome to this beautiful musical event. Our Bharat has maximum population of young generation, and the geographical and natural conditions of the country advocated constant experimentation. The legacy of art and taste has been carried by the country from the past and the present. The diversity of this country is a laboratory for the overall progress of the society. Faced with this reality, the Yuvak Biradari fraternity has been active for 5 decades through various activities to record changes around the world. It is trying to make the youth aware of the availability of various opportunities to create place in life, to provide a platform for guidance and encouragement in the company of accomplished, experienced thinkers in various fields. Since 1975, Yuvak Biradari, a leading non-profit organization in the country, has made its mark in the social and cultural fields, having been honored with many national and state level awards for its consistent work in various fields at the national level. The ideology of this program is to inculcate the values of humanity along with universal brotherhood in the young students very easily on the basis of music, and also to make them aware of the moral responsibility and adherence to the new code of conduct in the natural and cultural background. Teaching singing is not an end but a means, and recognizing this as such, this fraternity has embraced the poetry of luminaries in many languages. They have included poems written by Marathi poet Keshav Sood, Kushumagraj, Govindraj, Vilas Jaitapkar, Gujarat poet Dr. Shankar Joshi, Punjabi poet Shivkumar Batlavi, Tamil poem Subramanyam Bharti, Assami Dr. Bhupen Hazarika, Bengali Ravindranath, Kannad S.K. Narasimhaswamy, and Hindi Payam Saidi, Abhilash, and many, many more. So students, this is going to be a unique event where you all are going to be the star performers. So to begin the program, I would like to felicitate the leaders of this Yuvak Biradari. Thank you, ma'am. So we have total 12 members team from Yuvak Biradari. So as a representative, we are going to felicitate 2 members from them. So may I now request dignitaries, request to felicitate Professor Nagendra Rai. May I now request Dr. Kakhandikar sir, Professor Vamne sir, Dr. Archana Chaudhary ma'am, and Dr. Girisan sir to felicitate Professor Nagendra Rai. Thank you Nagendra Rai sir. We have second representative, Professor Atul Sundarkar. May I now request Archana Chaudhary ma'am, Dr. Kakhandikar sir, Girisan sir, and Gopal sir to felicitate Atul Sundarkar sir. Thank you Nagen sir, Atul Sundarkar sir and team. Now I will hand over the dais to the team for their performance. Let the stage is yours and enjoy, friends. It's Ek Sur Ek Tal team from Yuvak Biradari. Thank you. Yes. Hello. One announcement. Tomorrow at 9:15 a.m. Session 7 will start. Session 7 will start exactly at 9:15 a.m. Thank you.
Check. Hello. Check. Check. Hello. Hello. Hello, check. Mic testing 1, 1, 2. Check. Check. Hello. 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 Hello, check. Check. Mic testing 1, 1, 1, 2. Check. Hello. Hello. Hello, check. Check, mic testing 1, 1, 2. 1, 1. Check. Check, mic testing 1, 1. 1, 2. Check. Check, mic testing 1, 1.
लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। प्यारे युवा साथियों, मैं चौथी बार आपके इस परिसर में, आपके इस प्रांगण में हूं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं सबसे पहले कि इस तरह का आयोजन जिसकी आज समाज को जरूरत है वो यहां पे हो रहा है, एक सोशल लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए, उसके विकास के लिए। मैं युवक बिरादरी भारत के मातहत देश और दुनिया में ढूंढता हूं, लेकिन जब भी आपके परिसर में आता हूं तो मुझे कुछ बातें अलग नजर आती हैं। मैं बाहर सुनता हूं किसी कवि की बात, कहता है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले लगोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। कोई कवि कहता है कि मेरे दिल के किसी कोने में, ये वाह वाह बहुत आप देंगे, बशर्ते आपका तवज्जो चाहिए। आपका ये बड़ा भाई पूरी दुनिया में इसीलिए बदनाम है कि मैं अगर आपसे बात करूं तो बस आपसे ही बात करूंगा। कृपया ध्यान दीजिए। शायर कहता है कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख के दुनिया बड़ा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। लेकिन उन कवियों की, उन शायरों की शायरी यहां पे आकर के अधूरी हो जाती है, मुझसे दूर हो जाती है, क्योंकि ये परिसर उन बातों को झुठला देता है। जब मैं यहां आता हूं तो मुझे खुशगवार आपके चेहरे मिलते हैं, दिल खुश चेहरे, उत्साह से भरे हुए, एक दूसरे से मिलते हुए, गले में गले से साथ मिल करके आगे बढ़ते हुए। आपके लोगों में ही बहुत बड़ी बात है जो विश्व शांति की बात करता है। आपके यहाँ पे जो आपने बना के रखा है इतने ह्यूज स्टेज के ऊपर, ये चेहरे अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। मैं एक एक चीज देखने और सुनने वाला व्यक्ति हूं। दोस्तों, आपके बगल में लिखा है शीलम परम भूषणम। शील सबसे बड़ा भूषण है, आभूषण है। आप हमारे सामने लिख के रखते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अगर जन्मभूमि है तो वो स्वर्ग से बेहतर है। ये हमारी भारत की मिट्टी है और इसीलिए ये सारी बातें मुझे आपकी तरफ आकर्षित करती हैं। प्यार का रंग खिलता है, प्यार का रंग खिलता है जब दिल दिलों से मिलता है, मगर मुश्किल यही है, दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। इतने सारे दिल आज यहां मिल रहे हैं और इसीलिए युवक बिरादरी भारत की ओर से, संस्थापक माननीय क्रांति शाह की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और सिर्फ इतना कहता हूं, बिरादरी अपने कर्म में क्या सोचती है और क्या करती है। हम आपके साथ हंसने के लिए आए हैं, बोलने के लिए आए हैं, कोई लेक्चर के लिए नहीं आए। संगीत का जादू लेके आए हैं, औषधि लेके आए हैं जो अगले 1 घंटे में आपको 2 दिनों के लेक्चर के बराबर कुछ बातें देगा, अलग अलग भाषाओं में। सिर्फ एक ही बात है, हमें चाहिए आपका ध्यान, आपका समर्पण। देंगे? क्या मिलेगा? अगर आप हमारे साथ हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली हो जाए एक बार। जितनी जोरदार ताली होगी उतना जोरदार कार्यक्रम आपको मिलेगा। जोरदार ताली हो जाए एक बार। दोस्तों, ये खूबसूरत चेहरे मेरे तस्बीह के दाने हैं। तस्बीह यानी माला। बिरादरी कहती है ये खूबसूरत चेहरे मेरे तस्बीह के दाने हैं, नजर में घूमते हैं, ये इबादत होती रहती है। ये हमारे कर्म की बात है, हमारी पूजा की बात है। आइए मैं अपने सभी साथी कलाकारों के साथ आपके साथ चलता हूं, सफर की शुरुआत करता हूं। एक छोटी सी बात है,
जिसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। आप सब लोग आईना तो देखते होंगे, आप सब आईना देखते हैं। चलिए, आईने के सामने जो कुछ करते हैं वही आईना करता है, बराबर है। मैं आपके सामने हूं आज आईने के रूप में। आज थोड़ा उल्टा होगा, आईना जो कुछ करेगा वो आप करेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, सारे यूथ से, हैंड फ्री होकर के सीधे आकर के बैठे कुर्सियों के सामने, और जैसा मैं कर रहा हूं मेरे साथ साथ करें। प्लीज कोऑपरेट एवरीबॉडी, ईच ऑफ यू, एवरीवन, सबकी नजर हमारी तरफ। अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। यहां पे ऐसी बात नहीं होगी, आपको ऐसा कुछ करना है कि दुनिया देखे आपको। आइए मेरे साथ एवरीवन, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं आपको करना है। प्लीज स्टार्ट एंड सी द मैजिक। दादा तबला मॉनिटर ला देना। एवरीवन, ईच ऑफ यू, प्लीज कोऑपरेट माय फ्रेंड्स, यंग फ्रेंड्स, एवरीबॉडी। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं हर एक स्टूडेंट मेरे साथ रहेगा पूरी तरह से, साथ साथ, आगे पीछे नहीं। मैं जितना इस तरफ जा रहा हूं आपको जाना है, मैं जितना इस तरफ आ रहा हूं आपको भी आना है, बिल्कुल शीशे की तरह, आईने की तरह। वेरी गुड। क्या हम इतने बुरे हैं कि MIT के सभी दोस्त जो बाहर अलग अलग शहर से आते हैं, हम आपको अच्छे नहीं लगे? क्या हमारी दोस्ती कबूल नहीं है? खाली इतने लोगों को कबूल है, वहां पीछे। आपको आवाज आ रही है हमारी? तो साथ दीजिए प्लीज। रेज योर हैंड्स, बोथ ऑफ यू, दोनों हाथ ऊपर। थैंक यू सो मच। आप सिर्फ करिए, आपको बहुत अलग दुनिया में ले जाएंगे, सिर्फ कीजिए आप। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं अपने साथी कलाकारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको कुछ मार्गदर्शन दें और उसके बाद इस कार्यक्रम को हम आगे ले जाएं। अतुल सुंदरकर, धवल जी। धवल जी कमेंट। ओके, हाँ, फाइनल। मैंने सुना है कि इस MIT कॉलेज में बहुत सुंदर गाने वाले मेरे दोस्त लोग हैं। आपके इसमें कितने लोग ऐसा लगता कि मैं गा सकता हूं? तो मुझे ऐसे कुल मिला के 15 स्टूडेंट्स की जरूरत है जो आपके लिए माइक्रोफोन वेट कर रहा है, क्योंकि कुछ यहाँ से जो भी सीखेंगे, हम जो भी गाएंगे, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम का हमारे साथ हिस्सा बने और मंच पे आए। कुल मिला के 15 लोग मुझे चाहिए मंच पे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, धन धान्य पुष्प भरी वसुंधरा ये हमारी, इसमें है ये देश हमारा सब देशों से न्यारा, इसे सपनों से सजाया हमने स्मृतियों से है घेरा, ऐसा देश
ऐसा देश जहां में ढूंढे पाएगा ना कोई, सब देशों की रानी है ये हमारी जन्मभूमि। धवल जी, लिरिक्स। इसका मुखड़ा मैं आपको सुनाता हूं, बाद में हम साथ में गाएंगे। रेडी? 1 2 3 1 2 गो। वसुंधरा ये हमारी, उसमें है ये देश हमारा, सब देशों से न्यारा। इस सपनों से सजाया हमने, स्मृतियों से है घेरा। ऐसा देश जहां में ढूंढे पाएगा ना कोई, सब देशों की रानी है ये हमारी जन्मभूमि, ये प्यारी जन्मभूमि, ये हमारी जन्मभूमि। आलाप चूमे आकाश, यहाँ हरे भरे खेतों पे डोले पुरवैया हौले हौले। ऐसा देश जहाँ में ढूंढे पाएगा ना कोई, सब देशों की रानी है ये हमारी जन्मभूमि, ये प्यारी जन्मभूमि, ये हमारी जन्मभूमि। ओके, धुन एकदम, इसकी जो धुन है काफी इजी है। अभी लिरिक्स आपके साथ है, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ गाएं। आर यू रेडी? देखिए, शायद कुछ लोगों को लगता होगा कि हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, शो यहाँ होगा। यहाँ उल्टा होता है। हम यहाँ पे दर्शक हैं, आप कलाकार हैं। कलाकार मतलब वो जो कल को आकार दे, है ना? आप सब कल को आकार देने वाले हैं। इसलिए प्लीज कोऑपरेट एंड सिंग एंड डांस विथ अस। आपको साथ देने के लिए हम बुला रहे हैं हमारे साथी कलाकारों को। राजय वतनदार, प्रणीता सावंत, बहुत बड़े बड़े उस्ताद आर्टिस्ट हैं, जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। बहुत बड़े कोरियोग्राफर्स हैं, प्रणीता जी, उनके साथ मानसी और साथ ही साथ मधुरा। ये चारों लोग अपनी जगह पे आईने की तरह होंगे। ये कार्यक्रम एक सम्मिलित कार्यक्रम है, आप इस बात को ध्यान रखें। आप कोऑपरेट करेंगे, साथ देंगे, तभी आप आनंद पाएंगे। एक के बाद एक कई मणियां आपके सामने आएंगी। चलो शुरुआत करते हैं कमेंट्री के साथ।
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सन 1975 से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अनेक राष्ट्रीय व राज्यीय पुरस्कारों से सम्मानित देश की अग्रणी स्वयंसेवी संस्था युवक बिरादरी भारत सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में एक प्रबल हस्ताक्षर है। संस्था द्वारा मुख्यतः युवा विद्यार्थियों के लिए पद्मश्री क्रांति शाह की संकल्पना पर सफल व लोकप्रिय कार्यक्रम एक सुर एक ताल का अपना अहम स्थान है, जिसकी महत्ता आज तक संपूर्ण देश में सम्मिलित व प्रशिक्षित लाखों युवा विद्यार्थियों की अनुभवपूर्ण संप्रेषित भावनाओं ने स्वयं सिद्ध किया है। संगीत के माध्यम से बड़ी सहजता पूर्वक युवा में विश्व बंधुत्व के साथ ही साथ मानवीय मूल्यों का संस्कार तथा प्राकृतिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर नव आचार संहिता का पालन व उसकी नैतिक जिम्मेदारी का वहन इस कार्यक्रम का सूत्र वाक्य रहा है। भारत की सांस्कृतिक विरासत का गौरव बढ़ाने में करीब 22 प्रमुख भाषाओं का एवं 750 बोली भाषाओं का योगदान है, जिनमें से युवक बिरादरी ने प्रतीकात्मक रूप में कुछ भाषाओं का चयन किया है, अर्थात अन्य भाषाओं का अगले चरण में हम समावेश कर रहे हैं। Ready? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Everyone. आप सबको ऐसे करना है। सपनों से सजाया हमने, स्मृतियों से है घेरा। ऐसा देश जहाँ में ढूंढे पाएगा ना कोई, सब देशों की रानी है ये हमारी जन्मभूमि। Very good. हमारी जन्मभूमि। Everybody. ऐसी प्यारी नदियाँ कहाँ ऐसे घूमे पहाड़, कहाँ के हरियाली ऐसी धरती चूमे आकाश। यहाँ हरे भरे खेतों पे डोले फुलवैया। Very good. ऐसा देश जहाँ में ढूंढे पाएगा ना कोई, सब देशों की
जन्म लिया माँ अंतिम सांस यहाँ लूं। ऐसा देश जहाँ में ढूंढे पाएगा ना कोई, सब देशों की राह है ये हमारी जन्मभूमि, ये प्यारी जन्मभूमि, ये हमारी जन्मभूमि, ये हमारी जन्मभूमि, ये हमारी जन्मभूमि। ऊपर वाले से मैं मनाता हूं कि हमेशा आप यूं ही मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आपका उत्साह बढ़ा रहे। लेकिन मुझको लगता है शायद मैं जिस MIT में पहले आया था उसको नजर लग गई। क्यों ऐसा लग रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि ये कैमरे सब आपको ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको पा नहीं रहे हैं। आप कुर्सियों में खो गए हैं कुर्सी के चक्कर में। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं आपसे आपके लिए ताली बजाता हूं और याद दिलाता हूं कि आप MIT के स्टूडेंट्स हैं। आप ऐसा कुछ करें कि बाहर दुनिया वालों को एक संदेश जाए। आप खड़े हो जाइए, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। इसका मुखड़ा, अतुल, इसका मुखड़ा आप कह रहे हैं ना, ये मुझसे कह रहे थे नहीं सर ये बच्चे नहीं गा पाएंगे, ये बच्चे एक्शन नहीं करेंगे। आप इनको दिखाइए, धन्य धान्य पुष्प भरी, इनके साथ में मुखड़ा। कम ऑन एवरीवन, पुष्प भरी। 1 2 3 1 एवरीवन, 2 गो। सब लोग एवरीवन, अरे आपके पास ताकत है। कम ऑन, वेरी गुड। ओके गुड। यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं चेहरे। वाकई में मुझे लग रहा है कि मैं MIT में आया हूँ। बैठिए बैठिए। अभी ये एक नंबर था, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए। अभी तो शुरुआत है। आइए अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। बांग्ला की लिरिक्स। ओ माझी रे बांग्ला भाषा। ओ माझी रे डॉक्टर भूपेन हजारिका की रचना भारो तेरी माटीर घोरे। Come on, everyone!
राखल बेरू गोटेरे धेनु राखल बेरू तुलसी तोला प्रदीप जोला बाजत प्राणे घोष तुलसी तोला प्रदीप जोला बाजत प्राणे घोष ओ आरो तेरे माटिर घोरे तेरे आड़े नदीर तीरे बाजत सुखेर बांशी बाजत सुखेर बांशी मैं यहाँ फ्रंट सीट पे बैठे हुए तमाम अपने सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वहां से हमको नहीं देखना है, आप आइए इनको देखिए, प्लीज कम। आप लोग फ्रंट के जितने भी लोग हैं प्लीज कम। आइए सर आइए। आप वहीं बैठना चाह रहे हैं? ओके, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है, मैं समझ गया, चलेगा। देखिए, आपको पता नहीं कि आप कितना सुंदर कर रहे हैं। जब आप अपना वीडियो देखेंगे, नंबर 1 पे यहाँ पे है ये ग्रुप, नंबर 2 पे ये सामने वाला ग्रुप है, उसके पीछे के लोग, वाह, मजा आ रहा है। मुझे बहुत खुशी इस बात की हो रही है कि आप आज के युवा हैं और आप पूरे जोश के साथ देने वाले लोग हैं। आई रियली अप्रिशिएट। आइए तीसरे पायदान की तरफ बढ़ते हैं। सुंदर सा प्यारा सा एक अलग भाषा में गीत आपके पास ले आते हैं, एक ऐसी भाषा जो हमारे आपके आपस की भाषा है। हमारे बिल्कुल बगल का राज्य, चलते हैं गुजरात। अभी अभी आपने गणेश उत्सव मनाया, आने वाले समय में नवरात्रि आने वाली है। गरबा के साथ उमा शंकर जोशी जी की रचना। रेडी? चेक। आर यू रेडी? नहीं, मुझको तो आवाज आ ही नहीं रही है। यहां से तो आ भी रही है, यहां से। आर यू रेडी? थैंक यू, थैंक यू। 1 2 1 2 3 गो। कल कुंजन सुने पूछ शो तमे, अरे छे आशु अमे गीत गगन गाशु। क्या बात है, वाह वाह। अमे गीत मगन गाशु। वेरी गुड। अमे गीत गगन गाशु, अमे गीत मगन गाशु। म्यूजिक। सूर्य चंद्र ने दियो बोलवे, थारू नवलख तारा, हथेली आड़ी राखी रोको, वरसंती जड़ धारा। सूर्य चंद्र ने दियो बोलवे, थारू नवलख तारा, हथेली आड़ी राखी रोको, वरसंती गीत गगन गाशु, अमे गीत मगन
आकाशु कल कल कूजन सुनी पूछ शोक में अर्चे आशु कल कल कूजन सुनी पूछ शोक में अर्चे आशु हमें गीत मगन मागाशु 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 તમે કેમ છો? બધું મજામાં? ગુજરાતી આવડે છે? ओके 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 वेरी गुड। चलिए, अभी तो मैंने कहा था एक के बाद एक बहुत सारी चीजें। आइए अब आपको लेके चलते हैं आपको लेके चलते हैं एक ऐसे राज्य में जहां सरसों का साग और मक्के दी रोटी, वाह वाह वाह, अभी अभी दोपहर में इतना अच्छा खाना खाया, अभी पानी आ गया मुंह में। सरसों का साग और मक्के दी रोटी खा के गबरू जवान हमारे सिख भाइयों का अपना जाना पहचाना पंजाब। आइए गरबा के बाद चलते हैं भांगड़ा की ओर और ले चल के हैं, आवाज देते हैं एक ऐसे ढोल बजाने वाले को जो पुकार के कह रहा है, गा के कह रहा है कि ऐ मेरा ये देश, मेरे में इसकी मिट्टी, मेरे देश के वासी, जाग जा सवेरा हो गया। एक डगा टोल ते लांदा जा, मेरा सुतड़ा देश जगांदा जा, तू गांदा जा। Ready? 1, 2, 1, 2, 3, go! टोले तिलंदा जा मेरा सुतड़ा देश जगांदा जा। टोलिया में टोलिया ओ मेरे बेलिया, टोलिया में टोलिया ओ मेरे बेलिया। सुतड़ा देश जगा
विखलांदा जा मेरा सुखड़ा देश चलांदा जा। जागो 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 राय जागो 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 क्या आप पसंद कर रहे हैं? कुछ होता है? ओके, चलिए अब अपने राज्य में वापस आते हैं, इसके बाद कहीं और जाएंगे। मराठी बहुत ही पुराने कवि केशव सुत की रचना, जिन्होंने सावधान किया है बदलते हुए समय को, समाज को। एक तुतारी द्या मज आणुनी फुंकिन मीजी स्वप्राणाने भेदून टाकीन सगळी गगने दीर्घ चिचात्या किंकाळीने अशी तुतारी द्या मज आणुनी। केशव सुत की रचना, कुलदीप जी की म्यूजिक। 1 2 1 2 3 गो। एक तुतारी द्या मज आणुनी, एक तुतारी द्या मज आणुनी, एक तुतारी द्या मज आणुनी फुंकिन मीजी स्वप्राणानी, फुंकिन मीजी स्वप्राणानी भेदून टाकीन सगळी गगने, भेदून टाकीन सगळी गगने दीर्घ चिचात्या किंकाळीने अशी तुतारी द्या मज आणुनी, अशी तुतारी द्या मज आणुनी, एक तुतारी द्या मज आणुनी। ला 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 शूरानोया वरा करारे समतेचा ध्वज उंच धरारे, शूरानोया वरा करारे समतेचा ध्वज उंच धरारे, नीतीची द्वाही पसरारे, आवाज आवाज, नीतीची द्वाही पसरारे, नीतीची द्वाही पसरारे, नीतीची द्वाही पसरारे। तुतारी छाया सुरा बरोबर, तुतारी छाया सुरा बरोबर, तुतारी छाया सुरा बरोबर, तुतारी छाया सुरा बरोबर। बहुत सुंदर। आप बाद में भेज देना फोटो बेटा। हेलो, बाद में भेज देना फोटो, ठीक है? बहुत अच्छा। अब लग रहा है कि वाकई में मैं MIT पुणे में हूं। अब लग रहा है। आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, अपने लिए। आखिर की दो चीजें आपको सुनाऊं, क्योंकि हम लोगों को जो समय दिया गया है वो बताया गया है कि कुछ इसके बाद भी आगे चीजें हैं, आपको आना है, जाना है, बाद में आपको सुबह भी आना है। तो जो हमें शेड्यूल दिया गया है उसके अंदर ही हम अपने शेड्यूल लाना चाहेंगे, क्योंकि जो खत्म हो सके कभी ये ऐसा सिलसिला नहीं, संगीत की बात कर रहा हूं, जो खत्म हो सके कभी ये ऐसा सिलसिला नहीं, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी
भरा नहीं। ये वक्त की बात है, चलते रहेगा, लेकिन आखिर में दो चीजें, दोनों इस पूरे के पूरे परिसर में जो कुछ आपको सिखाया जा रहा है उससे रिलेटेड अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो अब तक जो हमने आपको बोला संगीत के बारे में, संगीत के द्वारा, वो सब कुछ वही था। और उसके बाद भी जो हम बोल रहे हैं हमारे गीत के माध्यम से, उनमें वही विचार हैं जो यहाँ पे सुबह से शाम तक आपको लेक्चर के द्वारा बताया जाता है, लीडरशिप की क्वालिटी दी जाती है। आइए एक ऐसी रचना की तरफ बढ़ते हैं जिसने महात्मा गांधी जी को महात्मा बनाया, महात्मा बनाया। उस गीत में वो ताकत है जो वो रोज सुनते थे, लेकिन हम आपको उसको भजन के रूप में नहीं सुना सकते। हम आपको उसे फास्ट ट्रैक पे, म्यूजिक पे लाके सुनाना चाहते हैं ताकि एक युवा इस देश का उसे ग्रहण कर सके। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। हमारे कोरियोग्राफर राजीव वतनदार कह रहे हैं इसके लिए आपको खड़े होना पड़ेगा और इनका साथ देना होगा। इस गाने को बड़े अच्छे अंदाज में आप कर सकते हैं। यू विल रियली अप्रिशिएट ईच ऑफ यू, एवरीबॉडी। सब लोग खड़े होकर के इनके साथ मूवमेंट के साथ ये गाना पूरा करेंगे। आपको शपथ है आप सभी को कि आप वाकई हमारा साथ दें, बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज एवरीवन, रेडी? वैष्णव जन तो तेरे कहिए वैष्णव जन तो तेरे कहिए ये पीड़ पराई जाने रे। वेरी गुड एवरीवन। उपकार करे तो पर दुखे उपकार करे कोई मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो मेरे कहिए। 1 2 3 4 वेरी गुड।
भण नरसैयो तेनु दर्शन करता, भण नरसैयो दर्शन करता, उड़ी को देता रे, वैष्णव जन तो तेने गईए, ये पीड़ पराई जान रे, वैष्णव जन तो तेने गईए, वैष्णव जन तो तेने गईए, वैष्णव जन तो तेने गईए। भारत देश मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास हम आपस में बात कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स की डिमांड है कि 15-20 मिनट लगेगा, जो आपने शुरू से किया है 2-3 गानों को एक बार रिपीट कर लें, और उसके बाद लास्ट में अभी हम जा रहे थे कव्वाली की तरफ और राष्ट्रगान जनगण मन। आपकी क्या इच्छा है? एक रिपीटिशन हो जाए शुरू से? ओके, क्या चाहिए सर? हमारे पास कितना समय है? 20 मिनट है? 20 मिनट, हाँ? सर ने समय बढ़ा दिया है, आधा घंटा दे दिया है। वेरी गुड, आइए स्टार्ट। हाँ, इसके बाद की 2 चीजें एंड में जोड़ेंगे। एक बार हम सब लोग साथ में चलते हैं स्टार्ट से यहां तक। प्लीज कोऑपरेट। रेडी? ठीक, हेलो, ठीक। इसके लास्ट में जब जो कव्वाली आप सुनने वाले हैं, उस कव्वाली में आज के देश और दुनिया की सारी बातें संजोई गई है। जरा आप सुनेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन वो आएगा 15 मिनट के बाद। प्लीज एवरीवन, ईच ऑफ यू ध्यान दीजिए। रेडी? एक सुर एक ताल अभियान। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सन 1975 से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अनेक राष्ट्रीय व राज्यीय पुरस्कारों से सम्मानित देश की अग्रणी स्वयंसेवी संस्था युवक बिरादरी भारत सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में एक प्रबल हस्ताक्षर है। संस्था द्वारा मुख्यतः युवा विद्यार्थियों के लिए पद्मश्री क्रांति शाह की संकल्पना पर सफल व लोकप्रिय कार्यक्रम एक सुर एक ताल का अपना अहम स्थान है, जिसकी महत्ता आज तक संपूर्ण देश में सम्मिलित व प्रशिक्षित लाखों युवा विद्यार्थियों की अनुभवपूर्ण संप्रेषित भावनाओं ने स्वयं सिद्ध किया है। संगीत के माध्यम से बड़ी सहजता पूर्वक युवा में विश्व बंधुत्व के साथ ही साथ मानवीय मूल्यों का संस्कार तथा प्राकृतिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर नव आचार संहिता का पालन व उसकी नैतिक जिम्मेदारी का वहन इस कार्यक्रम का सूत्र वाक्य रहा है। भारत की सांस्कृतिक विरासत का गौरव बढ़ाने में करीब 22 प्रमुख भाषाओं का एवं 750 बोली भाषाओं का योगदान है, जिनमें से युवक बिरादरी ने प्रतीकात्मक रूप में कुछ भाषाओं का चयन किया है, अर्थात अन्य भाषाओं का अगले चरण में हम समावेश कर रहे हैं। 1 2 3 1 2
से सपनों से सजाया हमने, स्मृतियों से है घेरा। ऐसा देश जहाँ में ढूंढे पाएगा ना कोई, सब देशों की रानी है हमारी जन्मभूमि, ये प्यारी जन्मभूमि, ये हमारी जन्मभूमि, ये हमारी जन्मभूमि, ये हमारी जन्मभूमि। अगले पायदान पे ये महान सुपुत्र थे। बंगला भाषा में लिखे गए इस गीत को डॉक्टर भूपेन दा ने अपने स्वर और संगीत से सजाया है। मिट्टी के झोंपड़ों, हरे भरे मैदानों व नदी के किनारों पर खुशहाली की मधुर बांसुरी बजने दो। जन जानवर, चरवाहे की बांसुरी की धुन, तुलसी की पावन छाया, प्रकाशमान दीप सभी को मिलकर हर्ष और उल्लास बिखरने दो। इस बंगला गीत का निर्माण डॉक्टर भूपेन हजारिका ने किया। ओ माझी रे, ओ माझी रे, हो माझी रे, हे हे। Come on, everybody. Come on. Humming. भारो तेरे मदिर थोरे, हे तेरे अड़े नदीर तीरे, बाजुक शुकेर बांशे, बाजुक शुकेर बांशे। भारो तेरे मदिर थोरे, हे तेरे अड़े नदीर तीरे, बाजुक शुकेर बांशे, बाजुक शुकेर बांशे। गुजराती गीत। गुजरात के महाकवि, शिक्षा शास्त्री एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर उमाशंकर जोशी ने एक कविता में लिखा है, हम गगन के गीत गाएंगे, हम मगन होके गीत गाएंगे। कल कल का निनाद करती इस स्वर धारा को सुनकर आप पूछेंगे, अरे ये क्या? सूर्य चंद्र व नवलख तारों को बुझा दो, हथेली पर बरसती जलधारा को रोक दो, हम सुर की सरिता में स्नान करेंगे। इस गीत को कुलदीप सिंह ने संगीत दिया है। हमें गीत गगन नागाशु, हमें गीत मगन वागाशु, हमें गीत गगन नागाशु, हमें गीत मगन वागाशु। कल कल कूंजन सुनी पूछ शोध में, अरे छे आशु। कल कल कूंजन सुनी पूछ शोध में, अरे छे आशु। हमें गीत गगन नागाशु, हमें गीत
टोलियां वे टोलियां पंजाबी गीत। पंजाबी भाषा के श्रेष्ठ कवि शिव कुमार बटालवी का ये गीत कुलदीप सिंह ने स्वरबद्ध किया है। ऐ ढोल बजाने वाले मेरे साथी, तू ढोल पर कुछ ऐसी थाप लगा कि मेरा सोया हुआ देश जाग जाए। इस संदेश के प्रसार के लिए तू गाता हुआ जा। पवन से कहो कि वो मेरे देश की खुशबू चतुर्दिश फैलाए। सूरज से कहो कि हर एक घर में अपनी रोशनी पहुंचाए। सावन से कहो कि वो प्रत्येक नगर में अपने सुख व समृद्धि की वर्षा करे। तू गाता जा। 1 2 3 go। एक तुतारी द्या मज आणुनी मराठी गीत। सन 1893 में मराठी के श्रेष्ठ कवि केशव सुत ने तुतारी गीत का निर्माण किया, जिसे कुलदीप सिंह ने स्वरबद्ध किया। हे विश्व के बिरादरों, मुझे ऐसी तुतारी दो जिसमें पूरी शक्ति के साथ तुतारी के सुर में प्राण डालकर दुनिया में समता एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज निर्माण हेतु आह्वान करूंगा। 1 2 3 go। एक तुतारी ग्रामस आणुनी, एक तुतारी ग्रामस आणुनी, एक तुतारी ग्रामस आणुनी, उंटी नमीजी स्वप्राणानि, उंटी नमीजी स्वप्राणानि, वेदुन टाकीन सगळी गगने, वेदुन टाकीन सगळी गगने, दीर्घची चाटा किंकारी रे, अशी तुतारी ग्रामस आणुनी, अशी तुतारी ग्रामस आणुनी, अशी तुतारी ग्रामस आणुनी, अशी तुतारी ग्रामस आणुनी। आपने हमसे डिमांड किया था, यहाँ पे पीछे स्टूडेंट्स आए थे, इसलिए हमने झलक के रूप में वो चीज़ें शुरू से फिर दिखा दी। अब अंजाम की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी वो गीत आपके सामने जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, कव्वाली। इसे ध्यान से सुने, हमारा साथ दें और इसके मैसेज को अपने साथ ले जाएं। कव्वाली। तेरी खुशी मेरी बंदगी, समाज प्रबोधन हेतु युवक बिरादरी का ये नृत्य गीत कव्वाली के माध्यम से लोकप्रिय बना है। हम जल, ऊर्जा, वायु, ध्वनि, निसर्ग व आंतरिक शुचिता, कन्या भ्रूण हत्या और गंदगी जैसे मुद्दों पर व्यक्तिगत भूल सुधार करें और सामाजिक तौर पर उसके प्रसार की भूमिका अदा करें।
पानी और हवा है तो सलामत हम हैं। नूर जो हम में है कुदरत का है वो नजराना, और हम हैं कि उस कुदरत को करते बेगाना। रूबरू हैं हम हकीकत से पर गुनाह करें, कैसे नादा हैं इश्क नफरत से बेपनाह करें। प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी, प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। हम बिरादर हैं तेरे, हम बिरादर हैं तेरे, तेरी खुशी मेरी बंदगी। प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी, प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। फसाद जंग खूरेजी हम मिटाएंगे, साथ मिल आलमी बिरादरी बनाएंगे। अनेकता में एकता है ये बताएंगे, दिलों को जोड़ेंगे यूं दिल से दिल मिलाएंगे। नफरतें दहशतें दुनिया से हम हटाएंगे, एक मजहब है एक राह हम दिखाएंगे। ऐसा करके ही खुशी, ऐसा करके ही खुशी दुनिया में देखो छाएगी। प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी, प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। हम बिरादर हैं तेरे, तेरी खुशी मेरी बंदगी। प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी, प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। आग हो मिट्टी हो पानी हो आसमां या हवा, धन हमारा है इनकी रक्षा हम करेंगे सदा। धन हमारा है इनकी रक्षा हम करेंगे सदा। जहाँ की आबादी अब और न बढ़ने पाए, माला इस खानदान की देखो न बिखर जाए। माला इस खानदान की देखो न बिखर जाए। श्रद्धा और प्रेरणा की, श्रद्धा और प्रेरणा की रोशनी लुटाएंगे, श्रद्धा और प्रेरणा की रोशनी लुटाएंगे। महिमा नारी की हर सदी में यार गाएंगे, महिमा नारी की हर सदी में यार गाएंगे। इस इबादत के लिए ही, इस इबादत के लिए ही पाई हमने जिंदगी। प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी, प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। हम बिरादर हैं तेरे, हम बिरादर हैं तेरे, तेरी खुशी मेरी बंदगी। प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी, प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। बेटियां हैं तो खिली गुलशन की हर डाली है, उनके होने से अपनी ईद और दिवाली है, उनके होने से अपनी ईद और दिवाली है। चांद है शबनम वो सूरज में छुपी लाली है, वो ही हर नगमा गजल गीत और कवाली है, वो ही हर नगमा गजल गीत और कवाली है। कैसे कातिल हैं वो, कैसे कातिल
प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। हम बिरादर हैं तेरे, हम बिरादर हैं तेरे, तेरी खुशी मेरी बंदगी। प्यारा हरे, हाँ प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। हरकतें अपनी वहशियाना हम दरिंदे हैं, हमसे बेहतर कहीं बेहतर हैं जो परिंदे हैं। हमसे बेहतर कहीं बेहतर हैं जो परिंदे हैं। बचाकर पानी प्यास धरती की बुझाएंगे, स्वच्छ और सुंदर हरी मांग हम सजाएंगे। स्वच्छ और सुंदर हरी मांग हम सजाएंगे। सुलभ हो सबको, सुलभ हो सबको ऐसा ध्यान में लाना होगा। सुलभ हो सबको ऐसा ध्यान में लाना होगा। स्वच्छ घर हर गली हर मोड़ बनाना होगा। स्वच्छ घर हर गली हर मोड़ बनाना होगा। कसम खाओ एवरीवन, कसम खाओ अब कभी बाहर ना होगी गंदगी। प्यारा हर, हाँ प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। हम बिरादर हैं तेरे, हम बिरादर हैं तेरे, तेरी खुशी मेरी बंदगी। प्यारा हरे, हाँ प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। मेरे प्यारे साथियों, जाने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूं। पीर पर्वत हो गई है, पीर पर्वत हो गई है, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं अपने सभी साथियों की ओर से, माननीय क्रांति शाह जी की ओर से, अपने MIT के अपर क्लास के ऊपर के सभी ऑफिसर्स को, जितने भी लोग अथॉरिटीज हैं उनको, और हमारे बीच में कोऑर्डिनेट करने वाली मैडम जो यहाँ खड़ी हैं, बिना बैठे जब से हम आए हैं, चौधरी मैम को, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खास तौर पे आप सबको एक आपसे संकल्प चाहते हैं, एक वादा चाहते हैं। हम सब गलतियां करते हैं, हम वो गलती कर दें दूसरों के लिए, एक बार चलेगा, माफ हो सकता है, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना कि तुम अपनी ही नजर में गिर जाओ। अगर अपनी नजर में गिर गए तो हम शायद एक दूसरे से आंखें मिलाकर कभी बात नहीं कर पाएंगे। इतनी ईमानदारी जरूर रखना, खूब बड़े बनो, उस जगह पहुंचो जहां तुम्हारी महत्वाकांक्षा है। ईश्वर आपको विल पावर दे, सब कुछ दे, लेकिन ईमानदारी अपने लिए, खुद के लिए बहुत जरूरी है। चिरागों को अपने संजो करके रखना, चिरागों को अपने संजो करके रखना। ये लंबी उम्र है, कहीं रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। राष्ट्रगान के लिए सब लोग खड़े होंगे। राष्ट्रगान के लिए एक बार राष्ट्रगान कर लेते हैं। सब लोग राष्ट्रगान के लिए प्लीज, कोई भी अपने जगह से मूवमेंट नहीं करेगा।
राष्ट्रगान के लिए एक साथ सावधान होंगे। सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता के, भारत माता के। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धन्यवाद। Yes, thank you so much team युवक बिरादरी team. Excellent performance. तहे दिल से हम MITWPU से आपका शुक्रिया अदा करते हैं. Thank you so much. Tomorrow's session will begin at 9:30, so all are requested to gather in the Pandal sharp at 9 a.m. Thank you so much. We will have a group photograph. I request everyone. Yeah, please. A group photograph. Camera. Photographer is here.
चेक चेक. पवन. जय जय. हर्षल तो स्टेज बॉक्स पाठव जय जवळ जरा.